A very good evening, everyone. I am Vanalma Somisilo, and I will be your anchor for this evening. On behalf of Vital Biotech Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, and Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, I cordially welcome you all to the fourth day of this 7 days international training come workshop on agricultural research, entrepreneurship, and skill development for a nation's growth. This program is jointly being organized by Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, and Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems which relates to food and agriculture. To achieve these goals, it is actively involved in the creation and manufacture of microbiological and biotechnological substances and molecules, gaining respect both domestically and globally in the field of scientific publication. Vital Biotech aims to publish top-notch, progressive, peer-reviewed research articles, whereas Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, serves as a spiral between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organizations, and corporate entities. It is a spherical organization of agricultural professionals and related sectors in India. It provides a common platform for various agriculture professions like professors, associate professors, assistant professors, PhD scholars, students, mystics, experts, and researchers working in various scientific institutions across India and abroad. Under the auspices of AFTFS Kota, Vital Biotech Education Group is aiming to increase the capacity of the agricultural and related industries by filling up skill shortages and upskilling the current and future workforce. We collaborate closely with all parties involved in agriculture to enhance the standard of living for researchers, professionals in the workforce, farmers, and farm and extension employees. Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram, Haryana, India is a premier institution under Dashmesh Educational Charitable Trust, founded in 1999. SGTU is one of the best private universities in Delhi NCR, India, with a rich legacy of excellence in research, innovation, and skill development. The Faculty of Agricultural Sciences at SGT University, established in 2016 and 17, is offering, besides others, courses of BSc Agriculture, MSc Agriculture and Agronomy, Horticulture, Vegetable Science and Plant Pathology, and PhD in Genetics and Plant Breeding, Horticulture, Agronomy and Soil Sciences in the Department of Agriculture. The faculty emphasizes innovative learning, critical thinking, and a more holistic approach to experiential discussion-based and analysis-based learning. I would also like to announce our knowledge partners for this program: Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur; Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana; Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow; Central Agricultural University, Imphal; University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka; University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka; and Agrosphere e-newsletter. Also, I congratulate the entire organizing team for organizing this insightful training program. And today we are highly privileged to have such honorable dignitaries among us. It is a matter of great pride for us today that we have Dr. Harpal Singh. Dr. Harpal Singh is Associate Professor in Agroforestry and an expert in high-altitude medicinal and aromatic plants at University Institute of Agricultural Sciences, Chandigarh. Dr. Singh earned his BSc in Forestry from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. Chaudhary Charan Singh, Shivdan Singh, Iglas, Aligarh, UP in 2006. His MSc Forestry from HMB Gharwal, Central University, Srinagar, Uttarakhand, Chauras campus in 2009, and his PhD Forestry in Forest Products and Utilization from Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Himachal Pradesh in 2014. Dr. Singh has been bestowed Appreciation Award for execution of students and capstone projects and is involved with research in industrial relations, internship training and placements of students, faculty development programs in farmers awareness camp, R&D data compilation and scopus publication, coordinated winter and summer term at Chandigarh University, acted as auditor in academic and administrative readiness audit internship training and FDP for faculties. Dr. Singh has also organized training and internship of students in collaboration with IIT Ropar under Awat DBT project. Sir has also worked with Ministry of Environment and Forest for compilation of reports in watershed development projects and other ICFRE-sponsored projects during his PhD studies.
and has worked for 6 months internship training with Forest Department of Uttarakhand for monitoring and evaluation of forest plantation by Ministry of Environment and Forest, Government of India. Sir has also organized and conducted national workshops, training, and FTP for faculty in collaboration with various government and NGOs. Apart from this, Dr. Singh has been bestowed numerous awards like Young Scientist Award, Harit Kranti Award, and Best State Volunteer Award. And he has to his credit nearly 40 NAS, SCI, and Scopus Journal, published 10 book chapters, 3 books, 2 package of practices, 2 monographs, 3 pamphlets, and has attended 24 national and international conferences. We feel honored to have you on our midst, sir, and we can't wait to hear from you. I hand over the stage to you, and I wholeheartedly welcome you. Over to you, sir. Thanks for nice introduction, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, my dear friends, dear students and faculty members, I welcome you all in the 7 days international training come workshop on agricultural research, entrepreneurship and skill development for nation's growth. So today is our 4th day training program. So my topic is role of entrepreneurship and incubation centers in the personality development of students in higher education institutions. As Madam has said well that I am already involved in various activities which are very important for students. So today I will be deliberately experiencing my things which are purely related to students. So first of all, role of entrepreneurship and incubation centers in the personality development of students in higher education. May I interrupt, sir? Your presentation is not visible, sir. Only the desktop Okay. is visible. Please. Okay, ma'am. Now it is visible? Not yet, sir. Now visible? Sir, we see the desktop files in the screen, not the. Oh, yes, now it's coming, sir. Yes, yes. Okay. So today I will deliberately complete the things which are for benefit of students, which are very important for entrepreneurship and skill development. So role of entrepreneurship and incubation centers in the personality development of students in higher education institution is multi-faced and significant. So here are some 7 key points which are very important. For example, first is experiential learning program. Second is risk and taking and resilience. Third is leaders and teamwork. Fourth is innovation and creativity. Fourth is mentoring and mentorship. Fifth is self-awareness and personality development. And lastly, ethics and social responsibility. So one by one, we will discuss these things very precisely. But most important is that how much aware we are related to entrepreneurship. So coming to government guidelines, as you know, all that NEP, National Education Policy, also emphasis on transforming higher education by multidisciplinary programs. So now currently, it is not important that we people are from engineering and we cannot go for the entrepreneurship in agriculture. So things are very much familiar, things are very much smooth, and we can execute a number of programs if we don't having background in agriculture. So entrepreneurship is not only to make new business, but it is very important for learning aspect also. So these things are very important for us. Now, first, for example, experiential learning program is related to incubation centers, which provide students hands-on training, experiential learning opportunities, engaging in real-world projects, business simulations, startups. There are so many different things which involve problem-solving skills, critical thinking, and many more which are important for personal development. Second is risk-taking and resilience. As we all know that entrepreneurship inherently involves risk-taking throughout our career also. Throughout our career, for example, right from beginning, are we aware of those programs which we were
thinking that we can do these things, we can go for these things, but currently what we are actually doing. So that coming over from those failures which cannot keep up. So developing those resilience, our mindset, our growth, adaptability, learning abilities, which are involved for entrepreneurship in one or other way. So leadership and teamwork is also important, as you know that in present scenarios, we have social media, we have so many different aspects which we cannot go individually. So managing projects, leading initiatives, having enhanced leadership skills, interpersonal communication, teamwork abilities, contribution to community development, personal development, these things are very important. So these kind of activities which will in one or other way will help us for various activities. Other most important is incubation. So incubation centers also support for fostering an entrepreneurship mindset characterized by curiosity, experimentations, resourcefulness, and many other aspects. So these things are very important. Other important thing is networking and mentorship. As you all know, that without mentorship or without the guidance of teacher, without the guidance of our supervisor, we can't do anything. No doubt, we are doing our work precisely, but we have to be very particular for that work. If we are doing some sort of beekeeping, we are going for organic farming, is our what is our portfolio? So engaging with this network exposes students to diverse perspectives, those facilitates knowledge exchange and provides mentorship opportunities. So building meaningful connections and receiving guidance from experienced professional contribute to the personal and professional development of student or entrepreneurship personals. Then self-awareness and personal development, which are also key aspects that we should go for SWOT analysis also, ethical and social responsibility. So these 7 key aspects are important for entrepreneurship. Now, in conclusion, entrepreneurship programs and incubation centers play a crucial role in the personal development of students. These things are very important. Excuse me. Kindly mute. Participants, kindly mute yourself so that we can go. We can have a no disturbance regarding our lecture. So self-awareness, leadership, innovation, ethical values, responsibilities, these experiences empower students to become well-rounded individuals, having good mindsets and success for their professional and their this entrepreneurship programs. Now, what is the current and demand and status of our agriculture? Because we people are from agriculture background and we can talk about agriculture. Agriculture is important for us. So how we can go for holistic approach to sustain the agriculture and for ultimately food security, nutritional security, and ultimately economy. As you all know that training of farmers or training capacity building is very important. So there are many important issues related to demography, for example, population, limiting of natural sources, deforestation is going on. We are going away from our traditional sources. So these key aspects are very important. So entrepreneurship also play an important role for training of farmers. We can maintain, we can learn so many things. For example, this simply foregoing soil health management, which ultimately includes agrotechnology, agro-processing, organic farming, or we can go for hydroponics and all. So ultimately, entrepreneurship and skill development have one or other role for increasing the this demand of crops and for diversification ultimately. Now, why solving world hunger is not just about making more food. How inclusive this innovation could transform food systems and help to end world hunger. Ultimate, this answer is industrialization, which needs to be part of the solution. Because if we have this placements for the students, if we have industry for our portfolio, which we are studying, which we are going for the to provide the capacity building to the scientists are as well as this stakeholders.
Then only we can go for these things which are implemented time to time. Now, you all know that this Rachel Corey, who at the age of 10 was a very strong, this uh, entrepreneur, was a very strong human being, which ultimately, which will sign us, which will show us path for some growth and development. Now, what is the background? If we are going for production, if we are going for resistance to stress and this disease and easy to grow and harvest, ultimately crop production, crop protection, breeding, or this food technology, what are the key factors? Are we understanding and improving crop photosynthesis? Are we going for only publishing the papers? Are we only going to listen to scientists? Are we ready for those things which are very important? That is actually entrepreneurship. Now, about 2 million people around the world suffer from hidden hunger. That is important. Getting enough calories, but not enough nutrition. So problem could be overcome either by providing supplements or by fortification of foods. Now, new technologies will undoubtedly allow development of new types of techniques, which ultimately results in entrepreneurship. Now, what to conserve? If I am going for entrepreneurship, if I am going for skill development, if I am going for agri entrepreneurship, what are the main things which I want to understand? How to address the farmers, how to interact with scientists. If we talk about ethics, if we talk about our religion, if we talk about our social system, what are the different scenario? For example, 4 Fs which come from forest. One is food, other is fiber, then fuel, then our food. So ultimately, if we conserve the forest, we can get all those things. We conserve the natural resources, we can get the sustainable development of sustainable farming. So these things are very important, which we must know. Now, what to do? If conservation of natural resources go wrong, nothing else will go right. According to Professor Swaminathan, an experienced farmer is a well-known scientist. So these things are very important for going any type of program. Normal Burlag, as you know, that father of Green Revolution, he also quotes some of the things which are very important, that attitude favors. We must change our attitude, our behavior, so that we can learn the things properly. Now, there are so many things people don't know. For example, if we have exotic farming, exotic type of fruits, which can give us more economic returns, but are we aware of those things? So these things are in collaboration. So research and education is important. Political acknowledgement is also important through their legal support, access to markets, public support and scaling of self-help groups, access to finance, networks and mutual support mechanism. So these are main actors which contribute to social enterprise ecosystem. If people are addressing the gathering, we are not here actors. Basically, we are learners. We are learning the things, and we are accordingly this approaching the stakeholders. Now, another question is, if we are going for farming system, is our traditional system very strong? Are we aware of the semi-commercial system? Is commercial system giving more returns? So ultimately, the result is that we should know the cropping pattern, cropping system, which leads ultimately to agronomy, then livestock production. So all the parameters, all the components, one by one, we have to learn so that we can recognize the things and ultimately we can act. Say, for example, if I am a forester, besides conserving the forest, I must know these policies and acts which are very important. I must know Indian Forest Act. I must know Indian Penal Code. I must know Forest Conservation Act. So these things are very important for entrepreneurship and skill development. Now, there are certain factors which are influencing the hunger. How we can overcome the hunger? So there are a range of factors. No doubt, crop diversification is ultimately result. But is there economy? If we go for crop diversification, is our income increasing? We can go for gender equality, vulnerability to climate change, resilience, which ultimately includes food security and nutrition. So there are so many answers, but we have to choose one major answer for which we have to work.
Now, the ideal food system, for example, if it offers adequate nutrition and health, creates biodiversity and avoids negative ecological and environment impact, so ensures livelihood and this uh, ensures this, what I mean to say that there are some uh, livelihood for farmers, diverse landscapes, equitable access to land, water, seeds, and other inputs. But these key attributes for sustainable food system are reliable. Literature, what literature is saying. So we have to go thorough for literature. We have to work on these parameters so that we have access to our entrepreneurship. Now, food technology or biotechnology is also important parameter, but value-added agriculture entails change of raw agriculture products into something new through processing. There are mainly three reasons why agriculture is important, why entrepreneurship is important, why skill development is important. For example, supporting livelihoods through food, habitat, and jobs, providing raw material for industry, building strong economies through trade, so agriculture impacts society in many ways. So these are some of the ways which we can go or we can understand. Now, what is our top priority? For example, we can go for pizza, we can go for burger, we can go for any other pasta. But are we aware of our cereals, millets, soya bean, groundnut, which actual we want? Why diversification in farming? So agriculture provides raw material, creates strong supply of food chain, encourages economic development, resources on the importance of agriculture. So these things are very important in our life. As we know that diversification is not only answer. Only answer is how we can utilize resources efficiently, how we can utilize water efficiently. As Madam has said, I was involved in one of the DST project, which is run by IIT Ropar, which is a mega project. That is this uh, hub for water technology. But are our students aware of those projects? They can get tremendous these ideas from that projects. They can um, go in collaboration with many universities so that entrepreneurship and skill development will lead to actual momentum. What will be our approach? For example, if I am agroforester, I am thinking of my, for example, orchard. That orchard will give me business growth, achievement, economy, power, ecosystem services or products. So there are so many different ecosystem services which are provisional, which are tangible, intangible, timber, these minor products, major products. So time is not actually, I am not getting enough time to explain all those things. But ultimately, these resources are not for recreational purpose only. They are in future, they are going to be very exhaust. So what we can think of? Tangible or intangible benefits which are provided by our forest, by our natural resources, which ultimately we are ultimately getting the ecotourism benefits. But we think of traditional sources which are very important in Ayurveda and all pharmacopies, ultimately the sustainable development or food security. So these approaches will never go for sustainable development, but we want certain key attributes. For example, adaptability, which increases diversification in farming, culture, tradition, rich tradition, productivity, which also lead to food security, innovation. Innovation is not only for trademark, patent, or any intellectual property rights, but innovation is for the knowledge also, for the security of students, for the upliftment of scientists. So these things are very important in our life as well as in skill development. Ultimately, entrepreneurship is food hub, but not, that is not necessary. IPR, intellectual property rights, ultimately GI tags and all. So we have to think for sustainability in terms of social, ecological, as well as economical aspect. Now, beyond food, this is a set of selected indicators and their relationship with urban challenge. So these orange arrows indicate indirect measures of urban challenges. So for example, if we are living in Chandigarh, is our future secure in Chandigarh? Is air quality, air index feasible? Or we are residing in different multi these
I mean to say that in those areas which are very highly this approachable, but are those safe for our future? So these things are very important, that urban challenges, for example, climate resilience, water management, green space management, air quality, range of factors. So these things are in one or other way. Urban agriculture has also positive implications for other aspects of urban sustainability, such as mitigating runoff and creating job opportunities. So in one or other way, these challenges are also related to entrepreneurship as well as skill development. Now we have different types of ecosystems in our on our land, because nature has provided us so many different types of ecosystems which are very important. For example, one is mangroves. In mangrove type of ecosystem, trees and shrubs specially adapted to grow in salty water along with coastal areas and tidal rivers, often providing critical habitats for many species. So we have to learn those species. For example, one example is Casuarina equistifolia, non-leguminous nitrogen tree species, which is also introduced in some parts of other areas which are not salty water, which is not coastal area. So we have to identify the tree species. We have to identify the crops which are introduced in what place. Soil and water lie at the heart of sustaining life on our planet. So soil health is also important, and the quality and availability of water are also interconnected. So at global level, we have to think upon these things, because ultimately if we conserve the soil, we are conserving agriculture. If we conserve the wetlands, we are conserving our agriculture. If we are conserving our estuaries, we are also conserving our flora fauna. So ultimately, sky is the limit. Entrepreneurship needs only the spark. So you can students can do a number of jobs. Platform is open for all. Now, these are some of the personalities which people don't know, which are also not scientists, which are also not economists, which are also not ecologists, but they are basically environmentalists. For example, Jadot Payeng, who is from Assam, he is doing tremendous job in conserving forest. Other is Balbir Singh Sachewal. He is also doing tremendous job in Punjab. Other is Anand Maligar, who is also doing tremendous job for conservation of water sources in Bangalore. So do we know them? What are their contributions? One video is also here. I am so you people. I will provide you this. I will provide you this PPT so that you can listen carefully and have holistic approach for agriculture. One other is People Baba. You all know, might know. I don't think you know or don't know, but People Baba Swami Prem Paryavartan is an environmentalist who is doing tremendous job in plantation. So basically, he's an English teacher, and so many different people are inspiring from him. Other is Rajendra Singh, who is basically from Rajasthan, and he is also doing a lot of tremendous work for the conservation of water and natural resources. So these things are very important for our mentoring, for our learning, for capacity building, not only for students, but we people also. So becoming a teacher is not the only duty to give a lecture in the class, but in one or other way, if we communicate effectively, if we explore the things precisely, then only benefits will be given to the students. Then only one can go for healthy entrepreneurship and skill development programs. Now, there are certain things which we must remember. फॉर एग्जाम्पल एज वी बचपन में ही हम लोगों ने सुना था, एक वो दिन थे जब लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन भाईचारा था. अब पैसा है लेकिन भाईचारा नहीं है. So this is intellectual things which we must know. So we know that we have different challenges. We have टांग खींचने वाले बहुत हैं, but the ultimate goal is that we must be a silent worker. And जब सक्सेस हो जाएगा फिर अपने आप वो शोर मचाएगी. So these things are very important. For example, I have put some of the things which we must remember. Past can't be changed. Opinions don't define your opinions do not define your reality. Everyone's journey is different. Judgment are not about us. Overthinking will lead us to sadness. Happiness is found within us. Our thoughts affect our mood. Smiles are contagious.
So kindness is free. It is okay to let go and move on. What goes around, don't this go for those things. Things always get better with time. जैसे कहते हैं टाइम सबसे बड़ा मरहम है. So students who are not involved in any kind of activities, go for activity. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सैर करो, बड़े लोगों से मिलो. Because some people say that if you are taking a coffee in a big mall, that doesn't mean that you will become रातों रात आप अमीर बन जाओगे, but you will learn some things which are very important for us. So here is also this. That is ultimately, that is important. So this, so success is not that which gold is not that which guilt us. So we don't require gold. We don't require currencies of developing countries, but we must develop ourselves. So coming to agroforestry, as you all know that this is the interaction of different components in agroforestry. We have trees, crops, and ultimately livestock production. So we are going for production, we go for sustainability, we go for adaptability. So these things are very common in our BSc undergraduate and postgraduate programs. So there are also 4 I's in agroforestry. One is integration, interaction, imperative, investment, and intensive. So these types of things are also important for entrepreneurship and skill development programs. Because if we don't know that how to grow, what to do, so things are very important. So in integration, structure and function is important. So in interaction, biological and physical interaction of crops is also important. We must know the chemistry of soil. We must know the this feasibility of the land. So these things are important. And ultimately, policy improvement, short rotation crops, land management. It is not all that we must know these things, but ultimately, what to grow, how to grow, what type of exotic plants we should care, what type of this orchards we should develop. So these things, small things, are very important for our entrepreneurship and skill development programs. So sustainable agriculture leads to environment, safety, societal development, and economical growth. So crop diversification, as we were discussing earlier, that crop diversification is not only to increase the production, but ultimately it requires some of the holistic approach which we must study and accordingly act. So various options of crop diversification are approached to horizontal diversification, vertical diversification, and other approaches. So these things are very common in our agriculture. For example, if we are going for floriculture, what to grow? For example, if we are in high altitude areas, what are the different types of glidolus? What carnation is not grown in this tuberose is not grown in this culture. So these things are very important for our agriculture programs. But ultimately, for entrepreneurship, as you will involve the things, ultimately you will get the so many different things which are very important for entrepreneurship and skill development. So are we getting away from these things? That is more important, because as you all know that, for example, we have different research stations in India. One is NDRI. NDRI is also working on climate change and resilience of animals. Are we visiting there? That's more important. कई बारी क्या होता है कि हमारे घर के पास में कोई रिसर्च सेंटर होता है और हमें पता ही नहीं होता कि वहां पे कौन सी क्या काम हो रहा है, कौन सी क्रॉप लग रही है. So these things are very important in our life also. So 3 research programs which are important for entrepreneurship, which are very important for skill development, ultimately lead to climate resilience, then programs for advanced research, plant and animal disease, program for productive legumes. So these types of research, these type of collaborations with research centers and other regional centers are very important, because every university has regional center, every agriculture university has its KVK Krishan Vigyan Kendra. So we must know these things in one and other perspective. So in India, we have biocultural rich tradition. That's our strength. For example, wheat, गेहूं. अगर गेहूं की बात करें तो हमारे पास दुनिया, and we have different types of species of wheat which we don't know, but we should know these things. राइस के बारे में अगर बात करें, in India बहुत सारे ऐसे बासमती राइस है जिसको GI टैग मिला हुआ है.
क्या हम जानते हैं वो चीजें? Then millets, we have kodra, bajra, proso millet, kodo millet, soybean. So ultimately tree species, and those species which are also cultivated in high altitude areas. For example, Indian elecampane, Inula racemosa, which is known as pushkurmul, and it is also a and this adult this it is also mixed in this Dabur Chamanpraj. So it is a very important this expectorant, and this very important for our various, which cures various diseases. So we must know these things in one or other way. So what is now major concern? Are we reducing anthropogenic factors? How to conserve our flora fauna? How to make control on forest fires? How to make this control on hazardous substances which we people are using from industries, from our households and other community areas? Grazing, browsing, lopping. So these are all cultural practices which are used in agroforestry and forestry. But ultimately, our attitude, our behavior is important. So we have different threatened and wild medicine plants of Himalayan region. Atis patis, Janshana kodu is there, Chora is there, which are very important resources for industry also. Then our cereals, pulses, spices, condiments, plantation crops. So sky is the limit. As I told you, there are so many different crops which we must know. As bamboo rattan is also there, which is also known as green gold. We have this fiber crops, jute crops. So these things, these species are very important. Now, say for example, this is a case study of saffron. Saffron is produced by very simple farmers, but it goes to the this baskets of Tata. So people give a tag and sell it for very high prices. Are our these farmers aware of these things? These kinds of entrepreneurship programs, these kind of skill development will enhance your creativity, and you will go for very important returns and economic benefits. Now, here are some of the RAVE programs which our students are studying. They are going for village surveys, and uh, students are asking me that how we people can improve our livelihood states of farmers. We can identify the problems of the farmers, thorough interaction and discussion, better understanding and learning, farming awareness and training programs. So these will lead to also entrepreneurship and skill development programs. Now, how to make solution? If we have a problem, how to make solution? Can we go for incubation centers? We can go for agri startup. We can go for entrepreneur and agripreneurship, subsidies provision, GI tax, patents, trademark, IPR related issues, biocontrol, precision farming, soil sampling, hydroponics, agroponics, vertical farming. So many different components are here which we can go for work. Now, here are some interests which are very important for considering the diversification of crops, because SWOT analysis is very important. What is our strength? What is our weakness? What is our strategy? What is our challenge? What are different important components? So these things are very important, right from marketing demand, crop rotation, climate and soil suitability, value addition of these products, risk management, government initiatives, and sport. One more important is that agricultural policies and performance. That is also important. And certainly infrastructure development, financial planning, agriculture policies, which I have already told, precision farming, organic culture, and most important, livestock and poultry production. Because ultimately farmers are doing tremendous, very competitive job in India through drones and this high-tech poultry farming. That is progressive dairy farming is also important aspect. So successful crop diversification requires a comprehensive and holistic approach that considers economic, environment, and social factors. So by addressing these interstices are important key factors, farmers can work towards achieving the goal of doubling their income while contributing to sustainable and resilient agriculture practices. These are some of the studies which our students do in field and compile report and also publish paper in NAS and reputed journals. So these are some of the questionnaires which our students are framing. So we are not stopping here. Our students are
going still, the work is going on. So these are the trainings of farmers with our faculty members and contribution towards development. We are going for tree plantation, farmers awareness camp. So some little beginning is a small achievement, but we are doing our efforts with full enthusiasm. But your need, your support, your blessings are also required. If you people want any help, I always there to help our students to any of the organization, because you all know that single person can't do anything, but if we have a team member, we can go for various activities which are very important for farmers, for skill development, for agri entrepreneurship and all. So industry exposure is also important. Our students have worked under internship with IIT Ropar under our project, in which scientists and other resource persons were hired from Punjab Agriculture University, Haryana Agriculture University, and other prestigious institutions to guide our students. Now, challenges and opportunities, a case study from Uttarakhand, which I have worked. I am just exploring the things that what you people can do, which other people do not know, because you people are ultimately students. You can have platform, you can go for higher studies, and you can identify the problem. So those problems you can work on, and you can have a successful entrepreneurship and growth. So these things are very important. For example, Tej Pratap Joginder Nagar from Himachal Pradesh. So this is also a spice crop. You can have also a very important, very secure future in this also. So these things are very, you must visit Kisan Melas, you must visit some of the organizations, Punjab, agriculture universities, your nearby universities, which from where you can have a very thorough knowledge regarding any of the facts. So these are some of the important information. For example, Inula Mission Manu of Lowland Spiti in Himachal Pradesh, Lavender Mission of J&K, Basmati of Dehradun, Kabir from Maharashtra, Agra Petha, Nagpuri Santrar, Onion. So agriculture is the largest employer in the world, and India is the second largest agriculture producer and seventh largest exporter of agriculture products. So you people have very important. You people have very thorough, you should have thorough knowledge, and you can go for any work in agriculture or allied sciences. So these are some of the pictures from Anula and Lavender. So millets. Now what will be the next strategy? For example, water is very important. So there are some of the organizations which work on this. For example, IIT Ropar, as I have told you, and one more is IIT Bombay, which are working on water conservation. So you people will also contribute some of the things which are important for these. So ultimately, biosafety awareness programs, attitude behavior change, learning by doing, adoption, production and sustainability, integration, infestation, market interventions, global demand, risk factors. So these all things are important by our ethics, by our religion, because Guru Gobind Singh Tri University is also contributing a lot. Same is from this organization from Jatinder sir, and we people are also contributing because farmer is an experienced scientist. According to MS Swaminathan, we should respect our farmers, we should respect our society, and we should respect our parents and our teachers, mentors, so that we can have a bright future. So transforming society through science is also important, as according to Jawaharlal Nehru. Time is very limited. Our students always visit to Kisan Melas and research centers, whether it is NDRI Karnal or these are nearby institutes. So we are always for the help of students. So these are some of the courses which you people can do on, can go for online. For example, this Manage Hyderabad is also conducting various programs. Move courses are there. One more organization is Apni Kheti. I am also life member of those organizations. If you people want any help, we can try to motivate you for your bright future. So these are some of the important initiatives by Government of India. Green hydrogen development by UP government. Green hydrogen, because green energy and renewable technology is also important for sustainable farming. So world's largest solar powered street light in Ayodhya. These are recent news which I have taken. So these are also important for your entrepreneurship, agripreneurship, because if you go, if you read a newspaper, you have ideas. So this is also
if you have any query regarding solar rooftop inquiry farmers, because these are they ultimately these are some of the important issues which we can address the nation. So reversing fortune through an IFS integrated this farming the system model success of Abdul Majid from Jammu and Kashmir. And as per Kafri Jansi, intercropping woody perennial solutions to erratic weather, says experts. So these things are very important for us. Our students are also doing tremendous job by taking prizes and all. This is Baba Farid College, where earlier I have served for more than 8 years, and currently I am in Chandigarh University. But I am always in touch with my students, in touch with my senior colleagues for learning and abilities. So we are also having fun in our university. If to 1 minute, I will show you. So there is we can't have nuisance and anxieties in our work culture. So these things are very important. So by ending my words, I am thankful to all those organizations for providing me valuable time and me as a keynote speaker for this 7 days entrepreneurship program. Thank you, sir. Thank you, ma'am, and thank you, dear students. If there is any query, any type of this issue, you can directly contact me or you can address me. So thank you, sir. Thank you so much, sir. The participants are saying that your presentation was exceptional, and one even said super session. So, sir, thank you so much for this educational presentation, which is very informative and interesting. And we really appreciate your concern for students in skill development as well as promoting entrepreneurship. I believe all the participants will enjoy and gain a lot of knowledge through it, and we wish and send our best wishes to you. So, sir, thank you so much. Now, moving forward, our next guest speaker is Dr. Prince. Dr. Prince is working as assistant scientist in the horticulture subject in the Department of Horticulture, having PhD in horticulture, floriculture, and landscape architecture from Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar. He also looked after one project on Precision Farming Development Center as co-PI to promote precision farming and project plasticulture applications for high-tech horticulture and operating to promote various plasticulture applications in horticulture by undertaking trials, demonstrations in state-focused crop, workshops, seminars, transfers of technology through training and awareness, and use of radio, TV programs, publications, and much more in different agroclimatic zones of the state. He got Best PhD Thesis Award from DRASS in Scientist Award ceremony at Department of Public Administration, Lucknow University, Lucknow, on July 12, 2019. He has published 14 research papers in reputed journals, 16 popular articles, 16 abstracts, 2 chapters in books, and 2 chapters in manuals. He has also delivered radio and TV talk and attended 12 national and international conferences and attended about 29 training programs. So, sir, I wholeheartedly welcome you and would like to hand over this virtual stage to Dr. Prince. Over to you, sir. Dr. Prince, kindly unmute yourself. Dr. Prince, kindly unmute yourself. Okay, sir. Thank you for telling. I was forget to unmute. So thank you so much, for very nice introduction. So without wasting any time,
we will move on our topic, value addition in flowers. As you all know, our title of training is Agricultural Research, Entrepreneurship and Skill Development for Nation Growth. So, how the floriculture is very helpful for the entrepreneurship development and skill development. We will move forward for the floriculture. So, how the flowers are very helpful for our community. So, first of all, I would like to introduce about the flowers. How the flowers are very important for us. You know, everyone needs flowers in our daily life. So how there is very famous quote, the peoples are born with the flowers, living with the flowers, and ultimately dying with the flowers. जब हमारा जन्म होता है तो फूलों के साथ होता है, हम फूलों के साथ रहते हैं throughout the life, during any stage of our life, during wedding, during celebrating our ceremonies, birthdays, marriages, anniversaries, and other things. Ultimately, during after dying, the flowers are very useful for during the last ceremony. So here we have some content, how we need the floriculture status, prerequisite for the value addition, diversification, essential or industries, and dry flower industries, extraction of dyes and pigments, flowers waste management, recent trends in value additions, prospect scopes, and ultimately conclusion. So, value addition. What is value addition? Anything we are doing with the flowers for changing their structures, shapes, and the values by adding some additions, we can improve their values. That is value addition. Value addition is ornamental is a process for increasing the economic value and consumer appeal of any raw commodity. The term is value added. The value added describes the economic enhancement of the products or services before offering them to the customers. This is value addition. By using raw material like individual flowers, we can make the bouquet, we can extract the essential oils from them, we can make garlands, we can make the gazras from them, we can make the some cosmetic products from the flowers like shampoo, essential oils, cosmetic creams, and other things we can made by the flowers. So that is value addition. There are two types of value addition, by using the fresh flowers and by using their processing. So why the need of value addition? To increase the economic value and consumer appeal of any floricultural commodity. Add value up to 5 to 10 times and provide quality products for the domestic and export market. To reduce the post-harvest losses, about 30 to 50% losses were there. So we have to use the processing techniques for the floriculture to reduce the post-harvest losses, to generate the employment, to avoid glut in the market, because of the fresh flowers are producing in a very huge quantity. So to avoid the glut in the market, we have to process them and make the byproducts by the floricultural crops, so that we can enhance our income and we can reduce the post-harvest losses. To improve the profitability of the farmers, to convert produce into useful products during the situations of natural calamity like COVID-19 pandemic. Classification of value-added products. There are three types of classification: fresh flower products, dried flower products, and processed flower products. Sorry So, to interrupt, sir, but can you please share your presentation in bilingual mode, if possible, Hindi and English?
Yes, yes, yes. Okay. फ्रेश फ्लावर प्रोडक्ट्स, ताजे जो फूल मार्केट में हमें मिलते हैं उनके प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, कट फ्लावर अरेंजमेंट्स, लाइक कट फ्लावर अरेंजमेंट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर। कट फ्लावर वो होते हैं जो डंडी के साथ मार्केट में मिलते हैं, डंडी जिनके साथ होती है वो होते हैं कट फ्लावर। जो लूज फ्लावर होते हैं विदाउट डंडी, जो विदाउट स्टिक जो फ्लावर्स होते हैं उनको लूज फ्लावर्स कहा जाता है। तो जो फ्रेश फ्लावर्स मार्केट में मिलते हैं उनका हम वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, उनका हम बुकेज बना के, बास्केट्स बना के, बंचेस के अंदर बटनायर बना के, कोर्सेज बना के, तो वो मार्केट में सेल करते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेश फ्लावर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल फ्लावर बेचते हैं तो इंडिविजुअल फ्लावर की कीमत क्या है आपकी, 10-20 रुपए पर फ्लावर। अगर रोज की बात करते हैं तो 15 रुपीज पर फ्लावर हमें वो मिलता है। तो अगर हम उन्हीं फ्लावर्स का यूज करके, कुछ फोलिएज प्लांट्स का यूज करके, पत्तियों के साथ यूज करके उनके सुंदर सा हम बुके बना के उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो बुके हमारे को 400 से 500 रुपए का मार्केट में हम सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारे हार्डली फ्लावर्स कितने लगे, उसमें 10 या 15 फ्लावर्स लगते हैं, तो हार्डली कॉस्ट आती है 100 रुपीज या 150 रुपीज कॉस्ट आती है फ्लावर्स की। और जो मार्केट में सेल करते हैं हम बुके बना के, वो अराउंड 450-500 रुपीज का वो सेल आउट होता है। तो लूज फ्लावर प्रोडक्ट्स क्या है, लाइक गार्लैंड्स, फ्लोरल स्ट्रिंग्स, पोमेंड्रस, रेड्स, फ्लोरल ज्वेलरीज, गार्लैंड्स, वेनी, बटन होल, फ्लावर बास्केट, फ्लोरल रैथ्स एंड कोर्सेज। तो जो गार्लैंड है, जैसे वरमाला, हम शादी, देखो शादी कैसा सेरेमनी है जो सभी की होती है, जो पैदा हुआ है इस धरती पे उन सब की शादी होनी तय है। ये जरूरी नहीं है कि शादी ना हो। तो उन सबको हमारी ट्रेडिशन है कि वरमाला का हमारे यहाँ यूज किया जाता है। तो वरमाला बनाने के लिए फ्रेश फ्लावर्स का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेश फ्लावर्स हमेशा जो है गार्लैंड्स मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे क्राइजेंथेमम है, रोज है, ये दो फ्लावर्स गार्लैंड मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लोरल स्ट्रिंग्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। रेट्स, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी वीआईपी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अगर हम एक राउंड सर्कल पे फ्लावर्स को डेकोरेट करके उसको रेत बना दिया जाता है, तो वो रेत जो है ड्यूरिंग हम किसी को शोक प्रकट करने जाते हैं तो वहां पे वो फ्लोरल रेत उसके सामने उसको रखा जाता है। तो फ्लोरल ज्वेलरी, जैसे कि आप गजरा बनाते हैं, साउथ के अंदर देखा जाता है कि मतलब डेली जो लेडी है गजरा का यूज करती है टू डेकोरेट देयर हेयर्स, अडॉर्न देयर हेयर्स। डेली फ्रेश फ्लावर्स का गजरा बनाया जाता है। अपना वेनी है, वेनी इज द फ्लोरल ब्रेसलेट। We can wear the bracelet to our wrists, uh, buttonhole, like Chacha Nehru were using the rose flower as a buttonhole to adorn their suit. Floral baskets, floral wreaths, corsets, etc. Edible flowers. There are so many edible flowers we can use for eating purpose. Like nasturtium is one of the flower we can eat them. Like hibiscus is also we can eat. And dried flower products, जो सूखे फ्लावर्स, फूलों को सुखा के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी हम उनका उनके द्वारा भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लाइक ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट्स, फूलों को सुखा के उनको हम होम डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, टेबल डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राइड फ्लावर बुके बना सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्लावर बुके हमने बनाया, वैसे हम ड्राइड फ्लावर बुके बना सकते हैं। मैं आपको आगे अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि कैसे वो लगते हैं बनने के बाद। फ्लोरल ज्वेलरी, पोट पुरीज, press dried flower products like greeting cards, bookmarks, paperweights, wall hanging, etc. Floral jewelry, potpourris. Potpourris are a mixture of the plant parts, floral parts and vegetative plant parts. कोई भी मतलब एक प्लांट का कोई भी मतलब जो है पार्ट हो सकता है, लाइक लीव्स, स्टेम्स, barks. We can use for making the potpourris. After harvesting this material from the plant, we can dye them and we can add some aromatic compounds into the potpourris to getting the fragrance from the potpourris. We can add into the almiras and in our rooms for the room freshening agents as a potpourris. And fresh pressed dried flowers products like greeting cards, you can see in earlier we are we are drying the flowers after placing them into the books
में हम फ्लावर्स को रखते थे, उसको दबा के रख देते थे, ताकि कुछ दिन बाद देखते थे उसका मॉइस्चर बिल्कुल लॉस हो जाता था और वो जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाता था और बहुत दिखने में बहुत सुंदर लगता था, हम उसको देखते थे। तो वो उन प्रेस ड्राइड फ्लावर्स को हम जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में, बुक मार्क्स बनाने में यूज करते थे। और फिर उसके बाद जैसे कि हम पेंटिंग्स में हम पेंटिंग्स करते हैं फ्लावर्स की, हम एज ए फ्रेश फ्लावर को ड्राई करके हम उसको वॉल हैंगिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा है हमारा प्रोसेस्ड फ्लावर प्रोडक्ट्स। वो है एसेंशियल ऑयल्स, फ्लोरल प्रोडक्ट्स, हर्बल मेडिसिन, डाइज फ्रॉम द फ्लावर्स, पेटल एम्बेडेड हैंडमेड पेपर, कॉस्मेटिक लाइक कैलेंडुला क्रीम, रोज वाटर, रोज क्रीम एटसेट्रा। एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? एसेंशियल ऑयल्स वो होते हैं जो कि प्लांट पार्ट से, किसी भी प्लांट पार्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उसमें एसेंशियल ऑयल मिलते ही मिलते हैं। तो जैसे कि हम रोज में से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका हम मैरीगोल्ड में से भी एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनी प्लांट पार्ट से हम एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो these essential oils are very useful for making the some byproducts like perfumes, incense sticks, ether, and other things. So these essential oils having very great demand in our floral industry, because the rate of essential oils depends on the crop. Usually the if we will say about the rose essential oil, then it will be around 200 sorry 2 lakhs per kg. The rate of the rate will vary according to the crop to crop and compound essential oil compound to compound. So cosmetic, if we take cosmetic products like calendula cream, rose water, and rose cream are produced from the floricultural product flowers. कैलेंडुला क्रीम, रोज वाटर, आपने देखा होगा कि जो हमारा गुलाब जल मार्केट में आता है, वो गुलाब जल जो है किससे बनता है? गुलाब की पत्तियों से बनता है। और उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि हम डिस्टिल्ड वाटर हम निकालते हैं, तो वो डिस्टिलेशन से ही हम जो है ना गुलाब जल बना सकते हैं। तो वो मार्केट में आप देखोगे कितना महंगा बिकता है। अगर आप प्योर रोज वाटर की बात करेंगे मार्केट से लेने की, तो आपको 200-300 रुपीज पर लीटर मिलेगा, है ना। तो रोज क्रीम है आपका, जो है हिबिस्कस के शैम्पू हैं, जैसे कि हिबिस्कस चाइना रोज प्लांट होता है, रेड कलर का फ्लावर होता है, वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आजकल जो है आप किसी भी अच्छे शैम्पू की बात करते हैं तो उसमें हिबिस्कस जो है एक कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो we will not going about the statistics for the floriculture. So briefly, I will tell you, Karnataka Karnataka, Tamil Nadu is leading in the floricultural products as a fresh flower and dried flowers. Like in Karnataka, Bangalore, rural and urban, Kolar, Tumkur, Kodagu and Belgaum is very famous for the producing the floricultural crops. And in Uttarakhand, Dehradun, Pantnagar, Udham Singh Nagar, Nainital and Uttarkashi. In Maharashtra, Nasik, Sangli, Sholapur, Satara, Ahmednagar. In Tamil Nadu, Dharampuri. So these are the top four agri-export zones in India, from where we are producing large quantity of the flowers, and we are exporting from India to the other countries for fetching higher money from the other countries, because of the in India there are various climatic zones, so that we can get the huge range of the flowers from the India. So there are top 5 Indian export destinations in the year of 2021 to 22. So the blue one is the USA country, and the yellow one is the Netherlands, and red one is the Germany, and this one is the UK, and this one is the United Arab Emirates. So fresh flower industry.
We can use these flowers as fresh flowers like marigold, chrysanthemum, tuberose, jasmine, rose, lotus, china aster, barleria, and champa. So main traditional loose flowers are these flowers. Rose, if in case of rose, the rose is the comes under loose and cut, because this flower we can use as a cut flower and loose flower. फ्लावर डेकोरेशन बिजनेस इन मैरिज हॉल्स। आप सबको पता है कि बिना फ्लावर के कोई फंक्शन नहीं हो पाता। किसी भी फंक्शंस में जाएं हम, वहाँ फ्लोरल अरेंजमेंट्स, विदाउट फ्लावर वी कैन नॉट डू एनी फंक्शन। द आवर फंक्शन इज नॉट सक्सेसफुल विदाउट flowers, fresh flowers. So you can say this stage is decorated with the fresh flowers. The floral arrangements were there. Different type of arrangement were there. Different type of flower arrangement in marriage halls and in Bangalore city. You can earn very good amount by decorating the some stays, some rooms in some hotels, है ना। तो इस टाइप की आप फ्लोरल अरेंजमेंट करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास ये देखिए कि मतलब कितना फ्लावर लगा है इसके अंदर, और हार्डली मतलब कितने फ्लावर्स होंगे, अराउंड 20 to 30,000 रुपीज के फ्लावर्स होंगे। और लेकिन आप ये देखिए कि इसमें फ्लावर अरेंजमेंट करके जो है 1,20,000 रुपये इसके कमा रहे हैं लोग। और ये फ्लोरल सेकंड वाला ये जो अरेंजमेंट है ये 75,000 रुपीज में, ये 45,000 रुपीज में। इट डिपेंड्स ऑन देयर योर आर्ट, हाउ यू कैन डिजाइन, हाउ यू कैन डेकोरेटिंग द एरिया। Different value added products for profit maximization. Different type of bouquets is there. After making these bouquets from the flowers, you can sell the flowers, bunch of flowers in 500 rupees to 1,000 rupees. By making different type of garlands, you can earn maximum money. If you are seeing around 500 grams or 1 kg flowers were there in the garlands, but you can get the 1,000 rupees per garland. जब भी हम कभी माला लेने कभी मार्केट में जाएंगे तो आपको 1,000 रुपए से कम की माला नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना कि वैल्यू एडिशन करके फ्लावर्स के साथ, वैल्यू एडिशन तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल को आप यूज करके उसके अंदर कुछ भी प्रोसेस कीजिए, और ताकि उसकी जो है ना वैल्यू चेंज हो जाए, एनहांस हो जाए, वो वैल्यू एडिशन होता है। तो ये आपका एक आर्ट है। उस आर्ट का यूज करके आप जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम कमा सकते हैं। सो अब बात आती है एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री की। तो एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री में जो है हम मोस्टली जो है रोज, जैस्मिन, ट्यूबरोज और मैरीगोल्ड फ्लावर्स का यूज करते हैं। हम रोज के अंदर हम देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पीसीज दैट हैव द वेरी गुड अमाउंट ऑफ द concrete and absolute content. Rosa damascena, Rosa borboniana, Rosa centifolia. In Rosa damascena, the maximum amount of concrete production were there, 0.5%, and in Rosa borboniana, 0.04%, and Rosa centifolia, 0.01%. In Jasminum auriculatum, Jasminum grandiflorum, and Jasminum sambac. Jasminum sambac is a very fragrant flower, and the varieties were mullai, parimullai, large round, large point, short point, Coimbatore 1 pitchy, Coimbatore 2 pitchy. So in case of tuberose, Polyanthus tuberosa is the scientific name of tuberose, and the varieties were Sringars and Rajat Rekha. These are single type of flowers. Single type of flowers are more fragrant than the double type of flowers. So in tuberose जो फ्लावर है उसको हम हिंदी में रजनीगंधा भी बोलते हैं, रजनीगंधा। अब हमारा जो है फ्लावर इस कंडीशन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हो सकता है। वी कैन ग्रो देम दी सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड हिंदी में जैसे कि हम इसको जो है गेंदा का फूल बोलते हैं। तो इस गेंदे के फूल में जो इसकी स्पीशीज होती हैं टेजिटस पेटुला एंड टेजिटस बेनिटा।
तो टेजिटस मेलिटा के अंदर जो है एसेंशियल ऑयल जो होता है 0.202 0.30% पाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स वी कैन यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल ऑयल फ्रॉम देम। Top essential oil manufacturers in India. Essential Oil Association of India, Shakarpur, Delhi. Shrey Essential Oil and Ayurveda, Gurugram, Haryana. Moksha Lifestyle Products, Karnal Road, Delhi. BMV Fragrances Private Limited, Greater Noida. Shiva Exports India, Kannauj, UP. Fragrance Palace, Janpat, Delhi. Indian Aroma Exports, UP. Natural India, Delhi. Vinayak Ingredients Private Limited, Mumbai. India Essential Oil, Delhi. These are the top essential oil manufacturers in India, which are dealing with the production of the essential oils. And you can see in UP, Kannauj is the area. In Kannauj, various small manufacturers were there. They are extracting the essential oil from anything, any plant material, in vegetable, in trees, they can extract the essential oils from them. So in UP, there are very intelligent people were there. They can extract the oils from anything. So import and export of essential oils. These are the companies. They are exporting the essential oil from the India to the various countries. Katyani Exports from Delhi, Khatriya Fragrances and Flower Limited, Mohit Chemicals, Shakuntalam Impacts from the Uttar Pradesh, Veera Fragrances Private Limited from New Delhi, Didisha Essential Oil Company from Mumbai, Aromas International from the Uttar Pradesh. So these companies are responsible for the exporting the essential oils from India to the various countries. Method of extraction of essential oils. There are various methods for extracting the essential oils from the from flowers and floral product essential oil containing plants. Distillation method is very common method we are using for from a ancient time. In distillation, there are various methods: hydro distillation, hydro steam distillation, hydro diffusion, and destructive distillation. So distillation is the process for making the for extracting the essential oil and the rose water. If we are saying about the extraction of rose water, we can use distillation method. In distillation method, it is nothing. There is a container. We can add some petals into the this container and add some water. After continuous boiling, the evaporation process were there, and that evaporating material having the some aromatic compounds from the petals, and they will condense into the this tube, and we can collect the that vaporing material into the our any bottle, and we will use it as a rose water. So वो कुछ नहीं होता है कि जैसे कि किसी भी आपने जैसे मान लो रोज फ्लावर्स की पेटल्स को ले लिया और उसको किसी बॉइलिंग कंटेनर में बॉइल करके उसके जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए, जो फ्यूम्स हुए, जो स्टीम जो निकलती है उसके अंदर से, उसको कंडेंस होने दिया। कंडेंस होते होते वो जो है जो वेपरी मटेरियल लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड को हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो रोज वाटर कहलाता है। ठीक है, और उसको हम डबल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं, और दोबारा से उसको डिस्टिलेट उसी लिक्विड को हम दोबारा से डिस्टिलेशन करेंगे तो डबल डिस्टिलेशन प्रोसेस करवाता है, तो प्योरिटी उसकी बढ़ जाती है। जो फिर दूसरा मेथड है इन्फ्लोरेंस मेथड, कोल्ड फैट मेथड। इसमें क्या होता है, हम एनिमल फैट्स का यूज करते हैं। एनिमल फैट्स की लेयर्स में हम जो है पेटल्स को या फ्लावर्स को प्लेस करते हैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। जो जितना भी एसेंशियल ऑयल के कंपाउंड्स होते हैं वो जो आपके उस फैट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो उस फैट की लेयर को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको किसी सॉल्वेंट के साथ
मिक्सअप करके उसके अंदर से हम जो है जो एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सॉल्वेंट जो होते हैं आपका अल्कोहल, एसीटोन, दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी कैन यूज फॉर दी एक्सट्रैक्टिंग दी एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम दी फ्लोरल प्रोडक्ट्स। मैसरेशन, हॉट फैट, जो है इन्फ्लोरेज और मैसरेशन दोनों सेम है। इसके अंदर हम हॉट फैट का यूज करते हैं और इन्फ्लोरेज में हम कोल्ड फैट का यूज करते हैं। Expression method, pressure by giving the pressure to the petals, by rupturing the tissues of the petals, we can extract the essential oils from the flowers. Solvent extraction, this extraction is very skillful. So we can use the solvents like acetone. Acetone for the extraction of the essential oil. We can uh, place the floral parts या flowers into the solvent, and जो solvent के अंदर जो है flowers जो है अपना aromatic compounds में डिजोल्व हो जाता है, और फिर solvent को हम जो है ना सॉल्वेंट के जो नेचर क्या होता है, जो है वोलेटाइल इन नेचर होता है, तो सॉल्वेंट को हम फिर वोलेटाइल नेचर होता है तो उसको वेपोरेट कर देते हैं, और वेपोरेट करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बचता है वो बचता है एसेंशियल ऑयल बचता है, उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। फिर कंक्रीट को फिर हम दोबारा से उसको प्योरीफाई करते हैं तो उसमें हमें एब्सोल्यूट मिलता है। एब्सोल्यूट की जो कीमत होती है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर एब्सोल्यूट को हम जो है आगे फर्दर डाइल्यूट करके हम परफ्यूम इत्र वगैरह बनाते हैं। सो मिट्टी अत्तर, आपने देखा होगा कि जैसे कभी कोई बारिश होती थी तो पहली बारिश हुई, काफी दिनों बाद बारिश हुई है, तो मिट्टी पे जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक अलग सा अरोमा मिलता है ना, तो अलग सी खुशबू आती है। तो अब यूपी में कन्नौज एक ऐसी जगह है, उन्होंने क्या किया था कि मिट्टी का अत्तर बनाया, वो वैसी खुशबू मतलब जो है ना, उन्होंने किसमें से निकाली, जो है आपका पास्ट क्ले में से उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पास्ट क्ले एंड डिस्टिल विद द एंशिएंट टेक्निक, जो है एंशिएंट टेक्निक से डिस्टिलेशन किया उसका, उसको मिट्टी अतर बोला। इट इज अ यूनिक सेंट क्रिएटेड बाय द लेजेंडरी परफ्यूम्स ऑफ एंशिएंट कन्नौज। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री। There are top 10 genera of dry flower in the world market, जिनकी वर्ल्ड मार्केट में हाई वैल्यू है, जिन फ्लावर्स का हम जो है ड्राइंग के लिए हम जिनका यूज करते हैं वो है हेलिक्राइजम, एक्रोक्लाइनम, लिमोनियम, निजिला, कर्टेमस, डेल्फिनियम, अमरेंथस, जिप्सोफिला, गोम्फ्रिना एंड रोज। Have you seen these flowers earlier? Dry flower arrangements. This is floral wreath, potpourris, floral baskets, corsages, bouquets, pomander, wall pictures, dolls, greeting cards. We can produce these products from the by the using of the dry flowers. You can see this flower basket. You can use it for the for very longer time into the your rooms, for table decoration, for the room decoration, and for the in offices for the table decoration. You can use these type of dolls for the dolls and wall pictures for the room decoration, greeting cards for giving the gift to the friends and other relatives. And the potpourris, you can use it for the for producing the aromatic compounds in the almirahs, your cloth almirahs, and your as a room freshener. Floral baskets are used for the gifting to the peoples. These are the various type of floral baskets showing. These are the floral and floral products and other materials we are using from the trees, and after getting the raw products, we can dyeing them and coloring them and making the beautiful products from these waste materials, from the deodar, blue pine, nicandra, laguras,
स्टेटिस एंड कोकुलस, स्टेटिस, हेलिक्राइजम एंड लेगुरस। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लोरल अरेंजमेंट जो है वेस्ट मटेरियल से हम तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है वे ऑफ माइंड कैसा है, किस तरह से आप मतलब इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस वेस्ट प्रोडक्ट को आप यूज करके कितना ब्यूटीफुल आप जो है अपना कोई भी चीज बना सकते हैं। Methods of drying. There are various methods for the drying of the flowers. Very old methods are sun drying, air drying, जो है कि हम पहले क्या करते थे, धूप में सुखाना फूलों को फूलों को हम धूप में सुखा देते थे, तो उससे क्या है कि फूलों की जो क्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती थी, कि धूप के अंदर एयर आपका जो है सन बर्निंग हो गया आपका। फिर आपका जो है कई बार क्या होता था कि मॉइस्चर ज्यादा है तो उसमें एयर के अंदर माइक्रोब्स वगैरह ज्यादा है तो माइक्रोबियल अटैक हो गया, फंगस लग गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। एयर ड्राइंग, एयर एयर सर्कुलेशन करके कि फ्लावर्स जहाँ पे आपने टाई कर रखे हैं उसके अंदर से एयर को ड्रिवन करना, फिर उन फ्लावर्स को सुखाना। प्रेस ड्राइंग, प्रेसिंग करके फ्लावर्स को किसी भी न्यूज़पेपर्स में बीच में फ्लावर्स को रख के फिर उसको प्रेस करना, किसी हैवी मटेरियल से प्रेस करके रखना, फिर न्यूज़पेपर चेंज करते रहना, फिर उसको हैवी मटेरियल के नीचे रखना। तो क्या होता था कि जो है धीरे धीरे उसका मॉइस्चर जो है लॉस हो जाता था और वो बिल्कुल ड्राई हो जाता था। ठीक है। एम्बेडेड ड्राइंग, एम्बेडेड ड्राइंग क्या होता है कि किसी भी फ्लावर्स को हम किसी भी डेसिकेंट मटेरियल में रख के उसको ड्राई करते हैं। जैसे कि आपका सैंड है, सैंड इज ए वेरी कॉमन डेसिकेंट मटेरियल। सिलिका जेल है, सिलिका जेल के अंदर आप जो है ना उस फ्लावर को एम्बेड उसको डिप करके जो है दबा के उसको जो है उसका जो मॉइस्चर लॉस उसका कर सकते हो। हॉट एयर ओवन ड्राइंग, आप जो है हॉट एयर के अंदर ओवन के अंदर आप उसको ड्राइंग कर सकते हो फ्लावर्स को विदाउट अल्टरिंग दी देयर ओरिजिनल टेक्सचर। माइक्रोवेव ड्राइंग भी कर सकते हैं, ग्लिसरीन ड्राइंग भी कर सकते हैं। ग्लिसरीन ड्राइंग बहुत जो है यूजफुल है विदाउट विदाउट अल्टरिंग देयर टेक्सचर, शेप एंड कलर। ग्लिसरीन ड्राइंग, ये जो सारे मेथड हैं इनमें क्या है कि आपका कुछ टाइम बाद जो है कलर फेड हो जाता है, लेकिन अगर हम ग्लिसरीन ड्राइंग की बात करते हैं तो ग्लिसरीन ड्राइंग के अंदर जो है आपका कलर लॉन्ग टाइम तक आपका फेड नहीं होता, क्योंकि यू आर रिप्लेसिंग द वाटर मॉइस्चर विद द ग्लिसरीन। सो द ग्लिसरीन जो है आपके प्लांट टिश्यू के अंदर लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो उससे जो आपका फ्लावर का कलर है बिल्कुल भी नहीं जाता। फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें जो हम फ्रीज ड्राइंग भी करते हैं, उसके अंदर फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, बिल्कुल हम लो टेम्परेचर पे उसको उसकी फ्रीजिंग करते हैं। जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, वेपर्स होते हैं इसके अंदर, फ्लोरल पेटल्स के अंदर, वो आपके जो है आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग। तो उसके बाद जो है हम वैक्यूम से उसको जो है उसका मॉइस्चर लॉस करवाते हैं। तो वैक्यूम से जो आपका सारा मॉइस्चर जो है निकल जाता है और जो आपके जो है पीछे से आपका एज ए ड्राई फ्लावर रह जाता है। तो उसमें भी आपका जो है फ्लावर का जो है टेक्सचर, शेप और कलर नहीं जाता। तो दीज आर द वेरी कॉमन मेथड फॉर वी आर यूजिंग फॉर द ड्राइंग ऑफ द फ्लावर्स। You can see the air drying and sun drying in this picture, and this is press drying, and this is embedded drying. We can dry the flower in any desiccant material like silica gel or other sand material, and this is freeze drying, this is oven drying. Marketing. Currently, 50 private companies operating from the Calcutta, Tamil Nadu, and Mumbai, close to the seaport, engaged in the dry flower export. Earning is rupee 200 and rupee 1000 per day per person. Entrepreneurship by women farmers. Actually क्या है कि ये जो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट है वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। वो घर पे बैठ के जो है मतलब इस टाइप का जो है काम कर सकते हैं और मार्केट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। हमारे जो अदर कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इनमें मतलब ड्राई फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो है। तो इंडिया से बहुत सी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनको प्रोड्यूस करना, ड्राई फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए भी आगे हम लोगों को जो है ना मैन पावर चाहिए। तो अगर हमें पता होगा कि हम इस तरह से फ्लावर्स की ड्राइंग कर सकते हैं और हम मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, तो हम मार्केट में compete कर सकते हैं फॉर फैचिंग दी हायर अमाउंट, हायर इनकम।
prerequisite for dry flower arrangement: bleaching, skeletonization, dyeing and coloring. ब्लीचिंग आप लोगों को पता है कि बहुत ही कॉमन मेथड है जो है। हम इस ब्लीचिंग में क्या करते हैं, ब्लीचिंग बहुत ऑक्सीडेटिव है और रिडक्टिव ब्लीचेस कैन बी यूज्ड ऑन द प्लांट मटेरियल, while former tends to break down colored compounds, the latter tends to modify them to the colorless compound. ब्लीच के अंदर हम क्या है, किसी भी फ्लोर का हम जो है ना कलर को बिल्कुल फेड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल कलरिंग करते हैं उसके अंदर। ऑक्सीडेटिव हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड एंड peroxides आर रिडक्टिव ब्लीचिंग केमिकल। सल्फाइड एंड बोरोहाइड्राइड आर यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग फ्लावर्स एंड foliages. Sodium chloride is an excellent bleaching agent because it is relatively selective for lignin without damaging the fiber. स्केलेटनाइजिंग में क्या करते हैं, जो आपका कोई भी लीव्स होता है, कोई भी लीव को हम उसका जो क्लोरोफिल कंटेंट, जो हरा दिखने वाला जो भी पार्ट है, इसको हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, जेंटली रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी प्लांट के अंदर, जो लीव के अंदर जो वेन्स होती हैं, वो वेन्स रह जाती हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो उसको हम एज ए ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो होता है सिलेक्शन ऑफ लीव, कोई भी मतलब आप जो हैवी टेक्सचर लीव को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पीपल की पत्ते को आप जो है ना यूज कर सकते हैं, उसकी हैवी टेक्सचर लीफ होते हैं। तो लीफ को हम एनओएस के अंदर बॉइल करते हैं, बॉइल करने के बाद जो है उसका ग्रीन पल्प को हम जेंटली रिमूव करते हैं, जेंटली रबिंग करते हैं, उससे जो ग्रीन पल्प रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद जो है उसका पीछे लेफ्ट ओवर बचता है, वो उसका स्केलेटन बचता है वेन्स का। Soaking the selected leaves for the 12 to 24 hours prior to the treatment is beneficial. 12 से 24 घंटे पहले हम उसको पानी के अंदर सोक करके रखते हैं और फिर उसके बाद एनओएच का ट्रीटमेंट दे, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है फॉर मेकिंग दी skeletonizing. Bleaching or suitable dyes can be applied to the skeletonized leaves. We can bleach them, and after bleaching we can apply any type of dye, any type of color to the skeletonized leaves. Dyeing and coloring. Dyeing or coloring enhances the value of dried flowers for enhancing their aesthetic beauty and product diversification. There are several methods for dyeing the plant material: dip dyeing, spray dyeing, and absorption dyeing. We can add on the bleached flowers after dipping into the colored dyeing material. After dipping, we can add the color to the any bleached flower, any type of color in dry conditions. Spray dyeing. We can spray the color material to the flowers for coloring them. एब्जॉर्प्शन डाइंग में क्या होता है कि जो आप किसी भी फ्लावर स्टिक को किसी भी डाई मटेरियल के अंदर जो है आप डिप कर दीजिए, तो उसके वो जाइलम फ्लोएम से जो है अपटेक कर लेगा जो आपका फ्लावर है। तो उससे क्या होता है, फ्लावर के अंदर डाई जो है नेचुरल डाई हो जाती है थ्रू द जाइलम फ्लोएम प्रोसेस। सो this type of dye we can use into the colorless flowers, like white flowers, like tuberose. In tuberose, the natural flower color is white. We can use the absorption dyeing for making the colorful tuberoses. Storing and packaging. There are various points for storing and packaging to protect from the atmospheric humidity, wind and dust. Dried products should cover with the plastic or transparent glass. Potpourris are normally designed in the glass bowl or stored in the colorful satin or muslin sachet, while other arrangements are designed in beautifully colored or shaped pots. Dried products should be treated with the suitable biocides and packed in a waterproof container. Small quantity of silica gel also placed at the bottom of and at the bottom to absorb the moisture. You can use the silica gel for the absorbing the excess moisture into them. Store separately different dried ornamental plants, plant material, and fix proper label outside with the complete description of the product kept inside. तो इस टाइप से हम जो है प्रोडक्ट्स को बना के हम उसको स्टोर और पैकिंग उसकी कर सकते हैं। और
काफी लंबे समय तक हम उसका लुत्फ उठा सकते हैं ड्राई फ्लावर्स का, जब तक आप चाहें। प्रोसेस्ड फ्लावर प्रोडक्ट्स, extraction of dyes and pigments. So there are flower dyes and pigments we can extract from the flowers for the natural dyes. Uh, for the deep color, sorry, deep yellow color, you can use the Anthemis nobilis flower फॉर एक्सट्रैक्टिंग दी दिस कलर। बोगनवेलिया स्पीसीज, जो बोगनवेलिया प्लांट होता है, उससे आप येलो, ऑरेंज, ब्राउन जो है डाई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से आप येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस जो है, उससे आप येलो कलर ले सकते हैं। क्राइजेंथेमम स्पीसीज से आप येलो कलर ले सकते हैं। क्राइजेंथेमम स्पीसीज से आप और भी कलर्स ले सकते हैं। कॉस्मस कॉस्मस सल्फ्यूरस से आप ऑरेंज रेड कलर ले सकते हैं। क्रोकस स्टाइवस से आप डीप येलो कलर ले सकते हैं। और डहलिया स्पीसीज से आप ऑरेंज और पीच कलर ले सकते हैं। इम्पेशंस बेल्समिनिया से आप ब्राउन और ऑरेंज कलर ले सकते हैं। सोलिडागो ओडोरा से आप येलो कलर ले सकते हैं। टेजिटा स्पीसीज से आप येलो और ब्राउन कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाई फ्रॉम द फ्लोरल वेस्ट। देखो आजकल जो है कि आप देखते होंगे कि हमारे मंदिरों के अंदर, जैसे मान लो मंदिरों में है आपका और स्टेज डेकोरेशन के बाद जो फ्लावर वेस्ट होता है, जो वो उसका कुछ नहीं बनता, तो उसको आप जो है ना डाई एक्सट्रैक्शन के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग दी वेस्ट फ्लावर्स फ्रॉम दी टेम्पल्स एंड दी एनी एनी फ्रॉम एनी इवेंट, आफ्टर कंडक्टिंग एनी इवेंट। जो भी है स्टेज डेकोरेशन के जो भी प्लांट सॉरी फ्लावर्स हैं, उनको आप जो है ना कलेक्ट करके उनको आप उनसे डाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं उनका आप और उनका आप और बाई प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। उनसे आप एसेंशियल ऑयल भी निकाल सकते हैं। उनसे आप पाउडर बना के उनका भी एज ए मेडिसिन भी आप जो है, कई प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, आप उनका वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट फ्लोरल प्रोडक्ट्स। टिंटिंग, टिंटिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डाइंग। जो है आप किसी भी वाइट फ्लावर को जो है आप कलर दे सकते हैं बाय द टिंटिंग, बाय प्लेसिंग द फ्लावर स्टिक इनटू द कलरफुल colorful material. That colorful material will transport to the petal through the xylem and phloem of the that stick. So जो है आपका जो कलर है नीचे से वो अपटेक होके आपके पेटल्स में आ जाएगा, तो उससे जो आपके व्हाइट कलर की पेटल्स हैं वो कलरफुल हो जाएंगी, जो भी आप उसको कलर दे रहे हैं। तो एक्वापैक्स to do RTD, resin encapsulation, edible flowers, fiber extractions, graphene extraction from the bougainvillea. These are the recent trends we are going on in the floriculture aspects. Tinting. अब टिंटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि टिंटिंग जो है आपका टेक्निक है यूजफुल इन द फ्लावर क्रॉप्स वेयर द कलर पिगमेंट इज एब्सेंट एंड ओनली वाइट और शेड्स ऑफ द वाइट कलर इज अवेलेबल। उनमें हम जो है कलर्स दे सकते हैं थ्रू दी आर्टिफिशियल डाइज। वैल्यू एडिशन ऑफ ट्यूबरोज स्पाइक थ्रो टिंटिंग। ये देखिए आपकी, अगर नेचुरली हम देखें तो ये ट्यूबरोज फ्लावर जो व्हाइट कलर का होता है, और जो है टिंटिंग अगर हम करते हैं तो देखो हम ये ऑरेंज कलर से हम टिंटिंग की तो ये इस तरह का जो है शेड आया, येलो कलर से इस तरह का शेड आया, ब्लू से करी तो इस तरह का शेड आया, पिंक से करी तो इस तरह का शेड आया। तो हम जो है ना कि हम फ्लावर को वैसे तो नेचुरली अगर चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जेनेटिकली जो मेकअप होता है प्लांट का वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो है बाई एडिंग सम artificial dye we can change the flower color. एक्वा पैक्ड बुकेज। अब ये देखिए कि ये वाला बुके जो है इसमें फ्रेश फ्लावर्स जो है यूज कर रखे हैं। अब फ्रेश फ्लावर्स को अगर आप एज इट इज अगर आप ऐसे रख देते हैं तो ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अब नीचे इसके देखिए ये इन्होंने बॉक्स है, इसके अंदर जो है ना कुछ जैसे वाटर है, वाटर के अंदर सुक्रोज है और अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो जो कि प्लांट ये स्टिक्स हैं ये अब्जॉर्ब कर रही हैं, उससे क्या लंबे समय तक ये जो है फ्रेश रहेंगी। तो ये एक्वा एक्वा पैक्ड बुके बोला जाता है इनको। इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो अपटेक इनका चलता रहता है, तो लंबे समय तक ये फ्रेश रहते हैं। तो टू बाय रॉक पेपर सीजर्स।
ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए कि आप द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट वेस्ट that holds a single stamp inside a plastic tube that protects the flowers in a shop and on the way of home while taking from shop to the home. The vase is made of recycled paper and the tube is made of the recycled PET plastic. Tutu was presented as a design tied in the Tokyo in collaboration with the Suntory flowers. Preserving the flowers in the resins. आप ये देखिए कि हम इसमें क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रिजर्व करते हैं फॉर लंबे लंबे समय के लिए। पहले उसकी ड्राई करेंगे, ड्राइंग ऑफ द फ्लावर्स, प्रिपेयरिंग द रेजिन, फिर उसके बाद क्रिएटिंग द मोल्ड इन द ग्लास इंडस्ट्रीज। हाँ, वी कैन यूज द फ्लोरल प्रोडक्ट्स इन द मेकिंग ऑफ रेजिन्स। Edible flowers. There are various type of edible flowers. These are having some antioxidant activities like nasturtium, viola, chrysanthemum, bohenia, rose, woodfordia, anti-inflammatory जो हैं होते हैं रोज, क्राइजेंथीमम, हिबिस्कस, वायला, हनीसकल, डेलिली। हेपेटो प्रोटेक्टिव होते हैं, एक्टिविटी होती है जिनमें nasturtium में, हिबिस्कस में, कैसिया और ऑरिकुलेटा में, बोम्बैक्सीबा में, वुडफोर्डिया में। एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो उसमें मैरीगोल्ड, बोहेनिया, हिबिस्कस, क्राइजेंथीमम। हेल्थ बेनिफिट्स इनके इतने ज़्यादा होते हैं कि हम मतलब इस सिंगल प्रेजेंटेशन में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर आर वेरियस फ्लावर्स in floriculture which are used in the cosmetic for making cosmetic products, for making some value-added products, and for the having the medicinal value like anti-diabetic value. Wood Florida, Butea, Monosperma, Malva, Salvestris, Bohenia, having the anti-diabetic properties, anti-obesity, hibiscus, tropelium, viola, rose, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, हनीसकल में होता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जो है कैलेंडुला, नेस्ट्रिशियम और रोज और हिबिस्कस जो है फ्लावर्स हम यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स और न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स। For the pharmaceutical compounds, some of the flowers crops are rich source of pharmaceutical compounds like catharanthine, vincercin, and catharanthus roseus, used for the cancer treatment. And for the similarly, vitamin C is isolated from the rose fruits, rose hip. अगर हम बात करते हैं रोज के फ्रूट्स की, तो रोज फ्रूट्स को रोज हिप बोला जाता है, जो कि आफ्टर फ्लावर जो है उसमें एक जो है ना फ्रूट बनता है, उसको रोज हिप बोला जाता है। वो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो विटामिन सी का, सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड उसके अंदर ही पाया जाता है। and is marketed as a rose hip vitamin C used for the cure of scurvy disease. It is used extensively to boost the immune system to fight the diseases. In terms of nutraceutical compounds, a number of carotene and carotenoids such as lutein, esters, lutein are effective in the preventing the controlling free radical generation, preventing free radical oxidation damage associated with the cancer, coronary heart disease, cataract, and age-related macular degeneration disease. Carotenoids, as chain-breaking antioxidants, protect cell and other body components from the free radical attacks. So there are various flowers. These are having the medicinal properties. What's new? Aromatica, fill the jing. You can say we are using the various flowers for making the drink, like tea. So like tea, hibiscus tea, rose tea. हम जो है फ्लावर्स का ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लू टी स्टार्ट्स इन आसाम। मिस्टर रंजीत बरुआ, ए वेटेरन टी connoisseur from the Assam, has started the production of the blue tea. It is the blend of butterfly pea and finest quality of Assam tea. तो आप ये देख सकते हैं कि मिस्टर रंजीत सिंह ने जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था ब्लू टी का। और हम इन फ्लावर्स का कहीं भी, जो एडिबल फ्लावर्स हैं, हम कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दी फ्लावर्स।
अब ये देखिए कि रोज कतली जो है बाय फॉर मेकिंग दी स्वीट्स जो है 1100 रुपीज पर केजी, रोज चिक्की 850 रुपीज पर केजी, चोको रोज लड्डू ₹32 पर पीस, रोज लड्डू फॉर 34 रुपीज per piece. We can use the rose petals for making the sweets. Successful entrepreneurs in the value-added floriculture. Mr. Gurpreet Singh Shergill, well-recognized floriculturist associated with the many prestigious government bodies from the Patiala, is producing rose water, rose sharbat, aloe vera, and amla juice. Compost and rose water are sold under the brand name Balsan, and rose sharbat, aloe vera, and amla juice under the brand name of Shergill Farm Fresh. अब ये देख सकते हैं कि रोज शरबत, रोज वाटर जो है फ्लावर से, बाय द यूज ऑफ फ्लावर्स, जो आप रूह अफ़ज़ा वगैरह मार्केट में आता है ना, गुलाब की पत्तियों का जो आप जो है अपना बनाते हैं ना, घरों में शरबत बनाते हैं, तो इस तरह के जो है मार्केट में बड़े मतलब सेल होते हैं ना। तो आप ये देखिए, आप इनमें कुछ नहीं होता कि इसके अंदर आपने शुगर का यूज करना है, और जो फ्लावर पेटल्स का यूज करके आप जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट जो है जूस बना सकते हैं, है ना। तो वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और वैसे ही ऐसे ही मिस अभिदन्या अनहल फाउंडर ऑफ द अटासी सोप्स पुणे इज क्रिएटिंग द अफोर्डेबल प्रीमियम सोप फ्रॉम द फ्लावर्स which are free from harsh chemicals. Mrs. Bimla Devi from Himachal Pradesh started everlasting startup on dry flower production and marketing. तो जो बिमला देवी ने है ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया फॉर मेकिंग द ड्राई फ्लावर्स, अरेंजमेंट, ड्राई फ्लावर मेकिंग, स्टिक्स, है ना, डेकोरेशन पर्पज के लिए जो आपका फ्लोरल बास्केट्स हैं, बुकेज हैं, ये सब जो है बिमला देवी द्वारा बनाए जाते हैं। एक अच्छा स्टार्टअप उसने शुरू किया है, और वो अपने जो है ना बहुत सी जगह पे प्रदर्शनी भी लगाती है, किसी भी मेले वेले में जो है अपना, है ना, तो वो प्रदर्शनी लगा के अपने प्रोडक्ट्स को दिखाती भी है और सेल आउट भी करती है। और वैसे ही जैसे कि हम मार्केट में से हम अगर मान लो किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, जैसे मान लो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सोप खरीदते हैं, बाथिंग सोप खरीदते हैं, अगर एसेंस स्टिक खरीदते हैं, तो हम उसकी खुशबू लेके देखते हैं कि मतलब कौन से फ्लावर की उसमें स्मेल आ रही है, अरोमेटिक कंपाउंड्स किस टाइप के हैं। तो हम जो जितना ज़्यादा मतलब हमें हमारे जिसकी सुगंध जितनी ज़्यादा अच्छी होती है हम उसी को प्रेफर करते हैं। तो वी कैन यूज द फ्रेश फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्लावर्स फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, है ना। वर्क ऑन वेल recommendations on post harvest technologies. So we can raise our recommendations according to the our crop and their packaging material result, packaging material, एनुअल क्राइजेंथेमम में जैसे CFB बॉक्सेज, करूगेटेड फाइबर बॉक्सेज जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 5 प्लाई, उसमें जिस बॉक्स के अंदर हमारी शेल्फ लाइफ अच्छी आ रही है उस हम बॉक्सेज को हम यूज कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्लेडल स्पाइक, जो है कि हम फ्लावर्स को जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में हम उनको पैक करना और स्टोर करना, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो है हमारा फ्लावर लंबे समय तक जो है ना फ्रेश रहे, और अप टू द जब फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचे तो वो फ्रेश ही पहुंचे। So we can make the herbal gulal by the use of flowers. कुछ भी नहीं है प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। पेटल्स को क्रश करके उसको जो है ना वार्म वाटर के अंदर 2 ग्राम सिट्रिक एसिड मिला के 1 घंटे के लिए रख देते हैं। फ्लावर डेकोरेशन डेकोक्शन करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसके अंदर 500 ग्राम ऑफ एरो रूट्स को शेड ड्राई करके 3-4 दिन रखते हैं, और फ्लावर गुलाल उससे बन जाता है। कुछ भी नहीं है, हम जो है ना अरोराट का यूज करते हैं इसके अंदर, और कलरेशन के लिए हम फ्लावर पेटल्स का से कलर को एक्सट्रैक्ट करके हम एज ए कलर मटेरियल यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for this insightful session, for sharing your valuable knowledge about floriculture and value addition in flowers. I'm sure the participants will gain a lot from listening to you and get inspired in floriculture for skill development and entrepreneurship. We wish that you will be blessed with more knowledge and success in your future endeavors. Thank you so much, sir.
Thank you, ma'am. So moving forward to our second speaker, Mr. Amit Deep Mishra, our third speaker. Mr. Amit Deep Mishra is project coordinator of Abhivyakti Foundation, Giridih, Jharkhand. Sir has earned his BSc Agriculture from Hempati Nandan Bhagwanagar World Central University, Uttarakhand, India, and MSc Horticulture from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, Uttar Pradesh, India. Mishra Sir is engaged in young skilling and giving them technical and financial support to start their own small and medium enterprise related to agriculture and allied sectors, and focuses on women empowerment and gender mapping, sustainable agriculture practice, natural resource management-based agriculture and allied-based activities, and he emphasized on agri-ecological approach to conserve local resources and sustain ecology, water harvesting, and soil enrichment by improving soil structure and maintaining moisture sustainably. Mr. Sir advocated government scheme linkages to the youth and women's engaged in agriculture and allied activities with local seed conservation through awareness in tribal and rural youth, as well as women's with aims to achieve nutrition-based, sustainable, integrated farming system. We are indeed very fortunate to have you on board, sir. So I wholeheartedly welcome you, and I would like to hand over this virtual stage to Sir Amit Deep Mishra. Over to you, sir. Thank you so much, Silo ma'am, for this beautiful introduction, and very good evening to all of you. Namaskar और झारखंड के लोकल भाषा में जोहार. Today I'm in this session to present my PPT. Let me share screen. Is it visible, ma'am? Yes, yes, sir. Wait a minute. Is it no? Is it on full screen? Not yet, sir. Okay. Sir, have you clicked on the Can you slideshow please mode? help me? Can you please help me to do it on full screen? Sir, below that, there are 4 buttons near notes and comments. They are on that fourth, no, almost there, yes, on your left. If you click here, there will be a slideshow option. Here. Okay, slideshow. Yes, 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 sir. If you put on the slideshow option, it will be on full screen. Okay, ma'am. Let me check. Sir, shortcut F5 also, if you can try, just press F5. F5 I already tried, ma'am. It's not working. Oh. Alt F5, let me check. I think it's no. अमित जी Yes, sir. हाँ, आपके मैंने एक रेड कलर से एक सर्किल बनाया है, उस पर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड फुल मोड में आ जाएगा. Okay, let me check. Yes. From here. ये Now देखिए. it's visible on full screen. Yes, now it Yes, is sir, on. yes, sir. Thank you so much, Jiten sir, for helping. So our topic is youth in agriculture and skill development and entrepreneurship. Let me introduce why I chose this topic, youth in agriculture. As we all know, throughout the worldwide, India is a country having highest number of youth population. इंडिया ऐसा देश है जिसके पास अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें 40 to 45% जो है परसेंटेज शेयर है हमारे यूथ्स का हमारे टोटल पॉपुलेशन.
जो कि 18 to 35 ईयर्स की एज रेंज की है। और उसमें भी अगर हम देखें तो 60% यूथ जो है हमारे रूरल इंडिया में। अब ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज भी है उनको रूरल इंडिया में रिसाइड करना, क्योंकि दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया। एंड नाउ challenges that are faced by our youth and Indian farming. Both Indian farming and youth both are facing challenges because they are in transition phase. Youths are migrating from rural India to urban India in search of some white collar jobs and some opportunities, 10 to 15,000 rupees job. But they don't want to stay in villages because they find farming as an unprofitable business. And youth find traditional farming practices as a unprofitable business. And there is a problem in agriculture, that is a price determination. Because after production, the biggest problem that our farmer faced is price determination. क्योंकि वहां पे उनके हाथ में प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं है। जैसा कि अभी आप एमएसपी पे देख रहे हो कितना बड़ा विरोध चलता है, कहीं ना कहीं वो सही भी साइड है, गलत भी साइड है, कुछ कुछ हो जाता है, तो उसमें हमें नहीं देखना। लेकिन हाँ, सही साइड अगर हम देखें तो हमारे फार्मर्स के हाथ में, जो मैं ग्राउंड पे भी देखता हूँ इन चीजों को जाके, कि वो अपने प्रोड्यूस को बहुत ही लगन से उगाते हैं, लेकिन उनको प्राइस डिटरमाइन करने का हक नहीं। दैट्स द बिगेस्ट इशू विद अस। Youth are somehow negative about choosing farming as a profession. हम भी एक यूथ हैं, और हमें भी अगर पूछा जाए कि आज आप एज अ पैशन मैं फॉलो कर रहा हूँ इन चीजों को, कि मैं ट्राइबल बेल्ट्स में जाके, झारखंड के और भी बेल्ट्स में जाके इन चीजों को वर्क कर रहा हूँ, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, स्किल अप पे, बहुत सारी चीजों पे। तो उसमें जो जैसा मैं देख रहा हूँ उनके बीच में कि, और जैसा रिपोर्ट्स भी कहती हैं, अगर आप देखोगे 60% यूथ हैं जो हमारे रूरल इंडिया में, उसमें 1.8% यूथ भी नहीं है जो कि वहाँ स्टे कर रहे हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी को, ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो शहरों को एक आसान माध्यम पाते हैं, और वहां पे जाकर वो सोचते हैं कि लाइक हम एक कह सकते हैं कि अच्छे खासे स्टेटस को अचीव कर चुके हैं, चाहे वो 15 to 20,000 की जॉब ही हो। लेकिन हाँ, सोशल स्टेटस जो अभी भी फार्मिंग को एक प्रोफेशन नहीं मानता है, फार्मिंग को एक प्रैक्टिस मानता है, आर्ट मानता है, लेकिन प्रोफेशन के रूप में युवा जो है अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर में there is a lack of skilled youth leadership and awareness about new and helpful technologies, because जब युवा इसमें आएगा तो वो कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एनजीओस and many other organizations working for farmers, and many new technologies updating regularly. So our traditional farmers, जो old age farmers हैं, they cannot be connected through that because they are not very much literate or not well connected with technology, so that they can be updated for uh, advanced agriculture. Soils are getting degraded due to application of chemicals without testing soil. Now it is the truth, because farmers are continuously applying heavy amount of fertilizers and chemicals, pesticides and all, because they don't know anything about their soil, because they don't have the soil testing reports. They don't have the knowledge about their ecology, how many pollinators are there to pollinate their crops, how many useful insects, their insects are there also there to help them, but they are destroying them blindly because they are applying non-selective herbicide and non-selective chemicals in lack of knowledge. They are not doing it intentionally, that they don't want any ecology throughout their cropping area, but their intention is not to destroy them, but unintentionally they are destroying, all because of heavy chemical works. And climate shift is the biggest issue that we are facing now. जैसा हम अभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट शिफ्ट झारखंड में जो हम देख पाएंगे कि 1 to 2 month हो चुका है, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि ड्राई स्पेल्स का फॉर्मेशन, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ड्राई ईयर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आप पिछले एक डिकेड में देखोगे तो 4 यहाँ पे ड्राई ईयर्स हो चुके हैं, 4 ऐसे ईयर्स हैं जो बिल्कुल ड्राई रहे। इसके पीछे का रीजन है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो प्रैक्टिसेस हैं, एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हम उसके स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं फार्मर्स, वो छोटे किसान हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं,
they don't have that much amount, yeah, that much economical support to implement on their field. इसके कारण क्या हो रहा है कि वो नेचुरल रिसोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये अन प्रैक्टिकल जो भी आप अपना रहे हो, आईसीआर का जो स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस वो अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इकोनॉमी भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या है कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोकल अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हुए, उनको आप बचाते हुए, इनको आप रिजनरेट करते हुए, इनको आप कंजर्व करते हुए आगे बढ़ो, ना कि आप जो बहुत ही स्टैंडर्ड पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हो उनके साथ बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटे स्मॉल हो और उनको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास यही बचता है कि आप कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ जाओ। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी तीनों ही ग्रीन होगी, और हेल्थ भी कहीं ना कहीं सॉयल का, वाटर का, ह्यूमंस का, हर किसी का मेंटेन होगा आपके फूड के थ्रू, फूड सिस्टम के थ्रू। और जब आपका फूड सिस्टम, फॉरेस्ट, ये सारे बचेंगे, जैसे कि हमारे राजेंद्र सिंह सर जी, जो पहले सर थे, वो उन्होंने उसको इसके लिए बोला कि फॉरेस्ट का हमें कंजर्वेशन भी करना है, क्योंकि वहां से हमें 4 एफ उन्होंने जो मेंशन किया वो मिलते हैं, फूड फाइबर एंड ऑल। तो ये सच बात है कि अगर हम पहले देखें तो हमारे यहाँ पे ऐसा था कि अ, वो बस थोड़ा बहुत अपने लिवलीहुड के लिए धान या गेहूं वगैरह उगाया, उसके बाद जो है सारा चीजें उन्हें या तो कॉमन से मिल गया या तो फॉरेस्ट से मिल गया, और वो बहुत खुश थे, अपनी इस प्रैक्टिस से बहुत खुश थे, और हमारी इकोलॉजी भी बहुत स्वस्थ थी। लेकिन ये केमिकल प्रैक्टिसेस से हम डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हाँ, ये जरूर है कि 1970s में इट वाज द नीड ऑफ ऑल टू गो विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्डिंग क्रॉप्स एंड ऑल। और आज भी ये नीड है, क्योंकि आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड घटती जा रही है, तो उसमें क्या है, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को अपना के ही हम, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम अगर अंधाधुंध बढ़ेंगे तो दैट विल डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर जनरेशंस टू। और कहीं ना कहीं आदमी बहुत ज्यादा सफल होने के बाद ना बिल्डिंग खाएगा, ना ही वो पैसे खाएगा। वो जो खाएगा वो हमारे नेचुरल, जो नेचर हमें दे रही वही खाएगा, वो एग्रीकल्चर ही उसको सपोर्ट कर पाएगी लास्ट तक। अगर हम देखें कि अपने यूथ्स को, जो मेरा वो है आज कंसर्न है कि उनको अंतरप्रेन्योर की तरफ बढ़ाओ। अंतरप्रेन्योरशिप, और बेसिकली बोले तो हम एग्रीकल्चर में उनको बढ़ाएंगे तो एग्रीप्रेन्योरशिप। तो देयर आर 3 पाथवेज, और ये हमारे 3 पाथवेज हैं जो अभी सामने खुल कर आ रहे हैं, कि ये 3 पाथवेज हैं जिसके थ्रू हमने किसी भी यूथ को, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोफेशनल हो ना हो, आज हर कोई, चाहे आप बीटेक देख लो, कोई भी देख लो, बड़े से बड़ा युवा फार्मिंग की तरफ घूम रहा है। वो फार्मिंग को अपने एज अ प्रोफेशन अपना रहा है। और जो पढ़ा लिखा युवा है, ना कि गाँव का युवा, वो जो बाहर जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, बहुत ऊपर तक पहुंच के कमा के जॉब क्विट करके तब उसको पकड़ रहा है, तब उसको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम उन्हें ये गांव लेवल पे ही समझा पाए कि अपने आप ये लोकल एनवायरनमेंट से जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, लोकल सीड का कंजर्वेशन करो, दैट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। इसके लिए क्या करना है, हमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। इंगेज रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, इसमें उसके बाद क्या है कि स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर हो, और फिर वो एग्रीप्रेन्योरशिप की तरफ पूरी तरह से फुल टाइम दे पाए। Youth should be engaged in agriculture as a part of their life. From starting, when they born in their rural India, there should be always some time जो आप उनको दें, और हमें उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको अपने लाइफ का एक पार्ट बनाओ, एक प्राइड का एक पार्ट बनाओ, ना कि इसे आप एक छोटा वो समझो। Need to make them believe that agriculture and allied activities are rewarding because they are finding that agriculture is not rewarding. और जैसा हमारे ओल्ड एज और ट्रेडिशनल फार्मर्स कर रहे हैं, आज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी शिफ्ट हो गई क्लाइमेट शिफ्ट के कारण। इसमें क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं, आज अभी देखिए कितनी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई हमारी गेहूं की, और भी सारी फसलें बेकार हो गई, और ये कितना मनोबल तोड़ देता है उनका कि यार इसमें क्या रखा है, इससे अच्छा 10-15 हजार की जॉब ठीक है, लेकिन ये फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए क्लाइमेट रिजिलियंट जो एग्रीकल्चर, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो अडॉप्ट करना हमारे यूथ के लिए ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा इसको अच्छे से समझ सकते हैं, वो उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, जो कि हमारे फार्मर्स जनरली नहीं कर पा रहे हैं। वो चेंजेस नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके कारण वो बार बार कहीं वो उसको फाइट करने में विफल हो रहे हैं। जो कि बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो वैरायटीज हैं, और भी उनका सीड ट्रीटमेंट है, और भी सारी चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट शिफ्ट को, जो 1-2 मंथ शिफ्ट हो गया, उससे रिलेटेड जो टेम्परेचर्स हो रहा है, वो और सारी वाटर अवेलेबिलिटी, और उसके अनुसार जो क्रॉप नई वैरायटीज डेवलप हो रही हैं, उसके अनुसार वो चलें, उसके साथ चलें।
तो शायद कहीं हम एक बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। Youth having leadership quality and having high risk bearing ability, which makes positive impact when they adopt farming as a passion and a profession. Because our farmers are not that much literate or that much risk bearing capacity now, and also they don't have that much leadership quality to determine the prices for their produce. But youths, they are having that capacity to decide their prices for their produce, and also they have the ideas to formation of FPOs and communities. Also आप कहीं भी एक देखो आज की आपके आसपास जो भी सबसे ज्यादा डोमिनेट है चीजों में, चाहे वो पोल्ट्री का बिजनेस हो, चाहे वो पोल्ट्री का बिजनेस हो, चाहे वो मशरूम का बिजनेस हो, यू कैन बी अ लीडर ऑफ देम। एंड आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, आप एक प्राइस डिटरमाइन पर डे के बेसिस पे कर सकते हो, उनको लीड कर सकते हो, लोकल मार्केट पे कब्जा कर सकते हो, और वहां पे प्राइसेस आप अपने स्तर पे रख सकते हो। जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम यहाँ दे भी रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। हमारे यूथ्स को जो आगे आते हैं ट्रेनिंग में, हम 6,500 यूथ्स को अब तक स्किल्ड कर चुके हैं और उनको एग्रीप्रेन्योर बना चुके हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ स्किल डेवलपमेंट। जब यूथ एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हो, इंटरेस्ट डेवलप हो, तो देयर इज नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज इफ दे विल बी नॉट स्किल्ड, वो सेम एक प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, देन दे विल आल्सो फेल। वहां पे क्या करना है कि इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर यूथ हैविंग वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस टू गेट स्किल्ड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी एज वेल एज अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक status of the rural India. Now, the ecology and economy of rural India is totally dependent on new technologies that should be adopted, and new mindsets. Leader mindsets should be come out, or should be come in front to fight with this जो हमारी आज रिस्क है उसको फाइट करने के लिए हमारे यूथ सबसे बेहतर साधन है। स्किल डेवलपमेंट इन आवर यूथ इज नीड ऑफ द आवर टू ट्रेन देम एज अ जॉब प्रोवाइडर, नॉट जॉब सीकर। आज स्टार्टअप्स आप देख रहे हो इंडिया में इतने तेजी से हो रहा है, इंडिया थर्ड नंबर पे आ रहा है स्टार्टअप में। अगर हम देखें तो बहुत तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी स्कीम है कि स्टार्टअप इंडिया, और कहीं ना कहीं हमारे यूथ का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है एज जॉब इज नॉट दैट मच। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स भी देखो तो जॉब रैपिडली डिक्रीज हो रही, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर ही बहुत बड़ा पॉपुलेशन को जॉब देता है। तो उसको और बेहतर और इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूथ्स आगे आए, स्किल्ड हों, और वो अपने एग्रीप्रेन्योरशिप को अपनाएं, और आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर जॉब और अच्छे वे में क्रिएट हो पाएंगी गांव स्तर पे भी। और हमें ताजा और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल दिस थिंग्स वुड बी अवेलेबल एट लोकल मार्केट लेवल एंड प्रॉफिटेबल कॉस्ट्स। एग्रीप्रेन्योरशिप, आफ्टर दैट दिस एग्रीप्रेन्योरशिप। अब रूरल यूथ इंगेज हो गया एग्रीकल्चर में, स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर हो गया, नाउ इट्स टाइम टू बी अ फुल टाइम एग्रीप्रेन्योर। बिकॉज हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये पा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 मंथ्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसके बाद 10 मंथ्स खाली रहता है। युवा युवा या फार्मर या वुमेन फार्मर्स, जो ट्राइबल फार्मर्स हो, 10 मंथ्स फ्री रह रहे हैं सर। इस केस में वो अपने इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे बैठ के खा सकते हैं? इस क्योंकि बेसिकली उनके यहाँ जो रेनफेड है, थोड़ा बारिश हुई उसके साथ उन्होंने कर लिया जो कर लिया, नहीं तो 2 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद उनके पास हायर एंगेजमेंट नहीं है फार्मिंग। तो इसके लिए उन्हें क्या है कि ट्रेनिंग देकर, स्किल डेवलपमेंट करके आप 10 मंथ या 12 मंथ फुल टाइम एग्रीप्रेन्योर बनाओ, जिससे कि उस इकोनॉमी का एक बेहतर साइकिल और ग्रीन इकोनॉमी की बेहतर पार्ट बन पाए, और अपने उन 10 मंथ्स को भी या 12 मंथ को फुल एंगेजमेंट कर सकें, और फार्मिंग को कहीं ना कहीं अपने एक साइड में करते रहें, इन चीजों को रेगुलर देखते रहें। तो हमारी लैंड भी वहां से डिग्रेड नहीं होगी। हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें जो हमने एक वो भी लिखा है कि जो आज हमसे अनफॉरगेटेबल फूड्स हैं, जो फॉरगेट हम भूलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिसेस से बाहर होते चले जा रहे हैं लोकल प्रैक्टिसेस से। तो उनको हम क्या कर रहे हैं कि उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, उनकी रीजनरेशन के लिए उनको लगवा रहे हैं सीड्स को, कहीं ना कहीं कलेक्ट करके प्लांट्स को लाके, जिससे कि वो फिर से अपनी वाइल्ड रिलेटिव्स में हो पाए, और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से हमारे डाइट में जो नेचुरल चीजें हैं, कॉमन से डाइट में नेचुरल चीजें भी मिल पाए हमारे वुमेन्स को, हमारे चिल्ड्रेन को, और वो अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के जो शिकार हैं उनकी डाइट की डाइवर्सिटी हो सके, कि उन्होंने पिछले पिछले 24 घंटे में कितना तरह का फूड ग्रुप खाया है, उसमें फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, मिनरल्स है नहीं, बस वो एक तरह का बस खा रहे हैं और कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। आफ्टर दैट
देयर इज अ वे ऑफ स्किलिंग आवर रूरल यूथ्स। एक मॉडल यहाँ पे हमने बनाया है, अगर आप इसको देखें कि हम अपने रूरल यूथ को कैसे स्किलिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो यूथ हमारे कंफ्यूज्ड हैं, फर्स्ट साइन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यूथ हमारे कंफ्यूज्ड हैं उनको स्कैन करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनकी काउंसलिंग करना। फिर उसको ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, चूंकि इसको हमने अपने अनुसार डिजाइन किया है, चूंकि हम अपने यहाँ रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी यूथ की करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उन्हें रहने खाने की सारी सुविधाएं देते हैं एज एन एनजीओ। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं इन चीजों को, और जो देश ले सकते हैं, जो कैपेबल है, उनके लिए हम एक पेड अमाउंट भी रखते हैं। तो ऑन कैंपस रखते हैं उन्हें। और फिर जाके जो महिलाएं बिजी रहती हैं दिन भर, जो आदिवासी महिलाएं हैं या जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, जो कभी जो करना भी चाह रही इंटरेस्टेड है लेकिन कर नहीं पा रहे, उनको ऑफ कैंपस भी जाकर उनके फील्ड पे ट्रेनिंग, हमारे ट्रेनर्स आते हैं उनको फील्ड पे भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को क्लियर कर पाए और इस स्किल को डेवलप कर पाए अंदर और जुड़ पाए। आफ्टर दैट उनको हम जब सिखा लेते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों, देन स्किलिंग अप इस मॉडल पे हम असाइनमेंट उन्हें देते हैं। जो हमने सिखाया 15 दिन आपको, उस पे आप 15 दिन का एक असाइनमेंट दे दिया, और उसके बाद हमने इसका एक रिव्यू किया, चेक किया कि आप कितना सीख पाए हो, आप कितना एक्टिव हो पा रहे हो। आफ्टर दैट देयर इज अ लिंकेजेस, जो गवर्नमेंट लिंकेजेस आपने अभी चर्चा भी किया, हम करते हैं। उसके बाद क्या क्या स्कीम्स के साथ इन्हें जोड़ा जा सकता है जिसकी इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उनको उसके साथ बताना, कहाँ पे अवेलेबल होगी, कैसे अवेलेबल होगी, कैसे वो जुड़ सकते हैं, उनको बताना। फिर उसके बाद उनकी ट्रैकिंग करना, मॉनिटरिंग करना कि जो फास्ट ट्रैक हाई पोटेंशियल रूरल यूथ है, HPRY, हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर जो हिडन पोटेंशियल था, नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड देयर सेल्फ एंड नाउ दे आर रेडी टू बी अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर, और वो और भी आगे जाना चाह रहे हैं। MSME में रजिस्ट्रेशन करने के बाद और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो देन हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, देन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग स्तर पे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, 1 वीक 2 वीक की ट्रेनिंग, जिससे कि वो उनका मनोबल और भी ऊपर हो सके, और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें, डेटा कैसे मेंटेन करना, रिकॉर्ड मार्केटिंग का कैसे वो एनालिसिस करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, अपने कम्युनिटीज को कैसे बनाना है, अपने अप्रोचेस कैसे बढ़ाने हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों का एक बेहतर ट्रेनर आए और ट्रेनिंग देते हैं। ये सारों के लिए अवेलेबल हो सकता है जो यूथ्स हैं हमारे, स्केलिंग अप मॉडल ये। उसके बाद हम उन्हें कनेक्शन देते हैं, कनेक्ट देते हैं कि आप और भी बड़ी लेवल पे जाके जो भी कनेक्शंस आपके लेवल के हैं आप उनको यूज करो, और वी मेक इट पॉसिबल कि आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बने। जो कंफ्यूज्ड युवा, जो एक अनप्रोडक्टिव था लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल हाई था, उसको स्क्रीनिंग करके आपने इसको मेक इट पॉसिबल बनाया, हाई पोटेंशियल रूरल यूथ, जिसको कहते हैं अर्ली एडॉप्टर्स ने बना दिया आपने लेगार्ड्स को। तो ये एक्सटेंशन का एक फॉर्मूला और भी आता है। इन सब को करते हुए हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो रूरल यूथ्स हैं हमारे, उनको हमें ग्रीन पाथवे का एक वो बनाना है, ग्रीन एनर्जी का वो बनाना है, ना कि वो अनस्टेबल इकोनॉमी के पार्ट बने, वो ग्रीन इकोनॉमी के, परमानेंट इकोनॉमी के और सस्टेबल इकोनॉमी के पार्ट बने। इसके लिए हम कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स करके रखते हैं, जिसमें आपको बताया कि हमने ट्रेनिंग देते हैं ऑफ कैंपस ऑन कैंपस। फिर इंक्लूसिव प्रोसेस में इसमें हम सिलेक्शन का वो रखते हैं कि भाई किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद मिक्स ऑफ थ्योरी एंड हैंड्स ऑन, जो हमारे पास मैनुअल्स हैं, जो हमारे पास प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, जो सारी चीजें हैं, इससे यूथ को ट्रेनिंग दिया जाए। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम, जो स्टैंडर्ड कैरिकुलम्स है ICR की या अदर जो डिफरेंट डिफरेंट अलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर की, उनसे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड स्किलिंग होनी चाहिए यूथ की, उसका ख्याल रख के हम सब उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और ये हमारी संस्था देती भी है। और स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो इंक्यूबेशन कनेक्ट, जो भी राजेंद्र सिंह सर ने पहले लेक्चर में बताया भी, इंक्यूबेशन कनेक्ट के बारे में किस तरह से उनको हम कराएंगे। आफ्टर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आप हर चीज को करते हुए अपने प्रोडक्ट्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं इस बिजनेस को अडॉप्ट करने के बाद, एग्रीप्रेन्योर बनने के बाद, आप फार्मिंग में आने के बाद, इन सारी चीजों का हम ख्याल रखते हैं। और ये यहाँ पे हम हेड्स बात करेंगे, कौन कौन से हेड्स हैं जिसके अंदर हम अपने यूथ की स्केलिंग कर सकते हैं। सो these heads are dairy technology. I think one of the is missing. Wait. Horticulture, जिसमें अभी आप इसके पहले वाले भी लेक्चर में आप देख रहे थे कि किस तरह से सर ने बताया कि फ्लावर्स का है, इसी तरह से फ्रूट्स का है, प्रोसेसिंग या उसका
सकता है आप फूड न्यूट्रिशनिस्ट, अपने कोर्स में ही होता है एग्रीकल्चर के। आप जब पढ़ते हो एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, मास्टर्स भी होता है। और डाइटिटिक्स बन सकते हो, किसी का भी आप पर्सनल डाइट चार्ट बना सकते हो, सारी चीजें हैं इसमें भी। एक बेहतर स्कोप है आपके लिए डेयरी टेक्नोलॉजी में। अभी हमारे एक ट्रेनी प्रद्युम्न को कल ही नहीं परसों परसों राज्यपाल महोदय जो अपने झारखंड के हैं, उनसे अवार्ड मिला है एक बेहतर दूध प्रोडक्शन के लिए। सबसे अच्छे नस्ल की गायों का चयन जो उन्होंने लोकल लेवल पे किया, उसको उन्होंने पाला, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बेहतर बेहतर प्रोडक्शन लेवल पे ले गए उसको। तो उसके लिए उनको एक बेहतर मतलब प्रथम अवार्ड भी मिला है। इसी तरह से हमारे युवा आगे आ सकते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीजों को इकट्ठा करके और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गांव स्तर पे, और बहुत सारा नाम भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन के। वेटनरी साइंस में है ही, आप फिशरी साइंस का आप देख ही रहे हो किस तरह से आज मछली पालन का, मत्स्य पालन का बड़ा वो है। और पोल्ट्री में तो नो डाउट है ही, आप सभी उसके उससे परिचित हैं। पोल्ट्री में अंडों से और मुर्गियों से सारी चीजें इसमें हम बैकयार्ड पोल्ट्री का भी, जो आपके पास घर के आसपास जो फालतू स्पेस है जिसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, बैकयार्ड पोल्ट्री का भी हम सेटअप करवाते हैं अपने जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनके लिए, जिससे कि वो फुल टाइम उसका भी सपोर्ट ले सकें और साथ ही साथ अपने डाइट में भी इंप्रूवमेंट कर सकें, न्यूट्रिशन में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में है ही, एग्रीकल्चर साइंस में आप बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर का वो बन सकते हैं। आप पॉली हाउस के अंदर ऑफ सीजन प्रोडक्शन का वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी अर्निंग हो रही है। जैसे हमारे और भी एक फार्मर है मनीष, वो अभी स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी वो 0.5 एकर्स में 2 से 2.5 लाख का उनका एक अर्निंग है एक्सपेक्टेड करते हैं। और भी वो बहुत सारी सब्जियां लगा रहे हैं ऑफ सीजन, आगे या पछेती खेती खेती जिसे कहते हैं, मेन सीजन से हटके, इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सेरिकल्चर तो वो एक है ही बेहतर उद्योग, और यहाँ पे भी हम दे रहे हैं इसका ट्रेनिंग। मशरूम कल्टीवेशन ऑब्वियस सी बात है, हर एक युवा इससे परिचित है, हर कोई पा रहा है। विटामिन डी का, मिनरल्स का, इन सब का रिचेस्ट एबेंडेंट सोर्स है। हम वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस दोनों लोगों के लिए मशरूम एक, और ये बहुत सारे तरीके का है, चाहे वो गैनोडर्मा हो, चाहे वो सिटाके हो, चाहे वो ऋषि मशरूम हो। तो इस तरह से बहुत सारे मशरूम हैं, बटन है, जो युवा अलग अलग पर्पज से अलग अलग चीजों का स्टडी करके अपने उसको अपने उसमें ऐड कर सकते हैं बकेट लिस्ट में बिजनेस के, जिसको वो किसी एक यूनिट को पकड़ के उस पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर चाहे मेडिसिनल यूनिट पकड़ के बढ़ सकते हैं, चाहे उसको लोकल मार्केट में सप्लाई के उससे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, जो कि काफी अच्छा छोटे मोटे जो इम्प्लीमेंट्स है जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल हैं, वो आज आप कनेक्ट करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, रिलेट करा सकते हैं फार्मर्स के, क्योंकि वो छोटे और सीमांत किसान है, तो उनके पास बहुत बड़ा एक वो नहीं होगा अमाउंट की वो बड़ी मशीनों खरीद पाए, तो छोटी मशीनों का बहुत आवश्यकता है। कम्युनिटी साइंस में बहुत अच्छा है, क्राफ्ट वगैरह का अच्छा बना रहे हैं हमारे जो युवा भी हैं, युवतियां भी हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसको मिला के अच्छा खासा कम्युनिटी साइंस का यूज करके वो चीजों को बना रहे हैं। और फूड का भी वो कहीं ना कहीं केक या सारी चीजों को इस तरह से बना रहे हैं। एपीकल्चर का एक बेहतर इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए, अगर आप कहें कि पॉलिनेटर्स जो है, हमारे बीस हैं, हमारे फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये हमारे जो मित्र कीट हैं, उनको एक स्वस्थ इकोलॉजी बनी रहे, इसका सबसे अच्छा पहचान यही है कि ये कितने ज्यादा संख्या में है ये पॉलिनेटर्स वहां पे। जितना ज्यादा संख्या में, इतना ज्यादा हमारी इकोलॉजी स्वस्थ है, और उतना ज्यादा हमने ये मेक श्योर किया है कि हम सस्टेनेबल ग्रो कर रहे हैं। अगर ये हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो रहे हैं, आसपास नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन और इंडिकेटर है ये, हमें समझ लेना चाहिए इन चीजों को। तो हमें ये इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को मेंटेन सस्टेनेबल वे में करना है। सॉइल टेस्टिंग लैब्स का एक अच्छा खासा युवाओं के लिए, क्योंकि आज हमारी मृदा कहीं ना कहीं इस चीज को डिग्रेडेशन झेल रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सॉइल टेस्टिंग। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने आपको यहाँ पिक्चर्स के माध्यम से नीचे दिखाया है कि किस तरह से ये युवा इसमें एंगेज्ड हैं और आगे अपने कृषि में आगे बढ़ रहे हैं। नो सॉफ्ट स्किल इंटीग्रेशन, अगर हम बात करें कि हम जब प्रॉपरली उनका स्किल डेवलपमेंट कर लिए, स्क्रीनिंग कर लिए और उनको फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बना लिए, तो हमें एक चीज में ध्यान में रखना होगा कि वो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जैसे कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग मान लीजिए कि हम पोल्ट्री यूनिट खोलते हैं, पोल्ट्री यूनिट में कि मेल है फीमेल है, उनके कार्य का हमें डिवाइडेशन एविडेंट करना होगा, जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि और फीमेल जो होती हैं फैमिली की, उन पे सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, एंड दे फेस सम हेल्थ इश्यूज एंड वीकनेस
all because of these responsibilities. So male and female should also uh, uh, divide their works according to their capacity and expertise. तो इस चीजों का, और साथ ही साथ सिप्स हमारा जो मॉडल है सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, एक इकोलॉजिकल बैलेंस को रखते हुए हमारा फोकस रेजिलियंस पे होना चाहिए। इसके साथ साथ क्लाइमेट एडाप्टेशंस को लेकर जो टेक्नोलॉजीज, हमारे यूथ ज्यादा बेहतर इन चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं, हर जगह से इसको खोज सकते हैं, और वो कनेक्ट अगर एक दो जगह से भी होते हैं तो हमेशा उनको कहीं ना कहीं लिंकअप मिलता रहता है नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए। उससे वो बेहतर फाइट कर सकते हैं। इसीलिए नीड ऑफ द आवर है कि हमें यूथ को ही जोड़ना है, हमें यूथ को एग्रीकल्चर में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बदल रही है, हमारा क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो रही है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, और पौधों का भी कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन हो रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का हल एक ही है, उन्हें गांव में रोका जाए। और लोकल रिसोर्स बेस्ड जो फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस है, जिससे इनपुट कास्ट हमारी घटाई जा सके और आउटपुट को बढ़ाया जा सके। इनपुट कास्ट घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दें फार्म को। अपने फार्म की जैसे गाय है तो उसका गोबर आप अपने यहाँ बायो रिसोर्स यूनिट हो, चाहे आपका पंचगव्य हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो आप इसमें यूज करें। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करें आप उसको। नीम का है, नीम की खली है, नीम का ऑयल है, नीम का स्प्रे है, उसको उबाल के सारी चीजें, जिससे कि आप बहुत सारे पेस्ट से निजात पाते हैं। और रेगुलर अपने मिट्टी को स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीजों से। वाटर होल्डिंग, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की अवेलेबिलिटी ना होना। लेकिन केमिकल्स को उसको डालने के साथ क्या होता है, वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर जो होती है, सॉइल की स्ट्रक्चर जो, वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारा रिटेंशन वाटर का लो हो जाता है। लेकिन इनको यूज करने से आई बल्क मैन्योर्स को, ये इम्प्रूव्ड होता है स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारी जो ग्राउंड वाटर में आज डिप्लेशन हो रहा है केमिकल्स का, जो हम कहीं ना कहीं आर्सेनिक से लेकर सारी केमिकल्स का आज मिलावट हो रहा है पानी में, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए मुश्किल हो रहा है, खड़ा कर रहा है, वो हम उसको टाल सकते हैं इन चीजों से। नौ, अब आता है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स स्किल अप प्रोग्राम्स फॉर यूथ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सो these are some platforms, or say organizations which helps our youth to be connected with agriculture and allied activities. So first one is state skill development missions of different states. So there's state skill development mission, which is governing by different state in different policies and different programs. So any youth, if want to connect or get training programs, he can go to his skill development mission portal of his state and their state, and they can search for training programs available for their skill up. And second one is KVK short hand training. So KVK is also providing short hand trainings in short period of time, short span of time. So youth can be connected from there and get proper training programs within a short span of time, and start their own business, their own startup in their own area. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एनआरसीज हो गई, और भी सारे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपने फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमेशा ऑर्गेनाइज कराती हैं। एंड दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन रहने खाने के सारी चीजें वो फ्री देते हैं, बस आपको एक बार इंटरेस्ट अपना डेवलप करना है एंड कनेक्ट होना है उनसे। दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा बहुत कॉस्ट भी रखते हैं, तो उसका वो नहीं है। लेकिन अगर आप बढ़ना चाहोगे तो आप बेहतर प्लेटफॉर्म्स इनसे पा सकते हो। एंड नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, जैसे एनडीडीबी हो गया है, एंड ये सारी चीजें हो गई। तो ये नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह ये सभी ट्रेनिंग देते हैं यूथ को, डेयरी वगैरह के, और भी अदर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जो हैं। और चाहे वो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड हो, एनएचबी भी कराता ही है, और आपका नाबार्ड भी है जो कभी कभी ट्रेनिंग स्पॉन्सर्ड करता है, जिससे बर्ड से अभी हुई थी ट्रेनिंग यहाँ पे। तो इसमें यूथ इंगेज्ड हो सकते हैं और अच्छी खासी ट्रेनिंग प्रोग्राम विद फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के थ्रू पा सकते हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको देता है ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीप्रेन्योर बनने के लिए। आईसीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो देती है। एनजीओस का भी है, जैसे हमारा एनजीओस है व्यक्ति फाउंडेशन, ये भी देता है। और भी बहुत सारे एनजीओस हैं जो आपको
इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हों, चाहे अदर टेक्नोलॉजीज से हों, चाहे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड किसी भी तरह का स्किल स्किल डेवलपमेंट या वो हो, उनका प्रोग्राम चलता ही चलता है, जिसके अंदर आप जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं और आप फिजिकल मोड में इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन हिडन पोटेंशियल जो आपके अंदर है, आप इन चीज़ों के लिए अभी श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो आप उनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर सम टाइम टू गेट दैट कॉन्फिडेंट बैक इन योर सेल्फ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और आप सारी चीजों को, मार्केट लिंकेज को, प्राइस डिटर्मिनेशन को, लीडरशिप को, मैनेजमेंट को, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने को, और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को, सारी चीजों के इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ ग्रीन इकोनॉमिक पार्ट कैसे बनेंगे, आप उनके साथ एक्सप्लोर बेहतर कर सकते हैं एनजीओ के साथ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है, उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हाइब्रिड मोड में अक्सर रहते हैं, आप कभी कभी ऑफलाइन भी ये चीजें अवेलेबल होती हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आप ले ही सकते हैं, और साथ ही आप इंटर्नशिप वगैरह करके इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं मोड है बिजनेस का, तो आप इन चीज़ों को वहां से सीख सकते हैं। अब हम स्टार्टअप्स पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े बात करें, तो in India, 3,000 plus startups are registered till date in agriculture, which is 5% of total startups in India. So I have already told you that our India is on third position in terms of startups, and startups is growing very fast in India. And I would like highlight some business link ups in which startups are working very fine, very well. So there are three fields: precision farming, supply chain management, and market linkage. So if any youth wants to start his own agripreneurship in or startup, so these are three fields where he can grow very positively. Tech startup are developing innovative solutions for various aspects of agriculture, including precision farming, supply chain management, and marketing linkages. These technologies can help and improve productivity, reduce costs, and increase the income of the farmers. And this is the need of our to decrease the input and increase the income of farmers while using the sustainable agriculture practices, not through unsustainable agriculture practices. So you can give the linkage to them. You can also start the import export business with not that much input. बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि यार बहुत पैसे लगेंगे सारी चीजें, लेकिन नहीं, हमें बस लर्निंग चाहिए। और जब आप कॉन्फिडेंट पाते हो, लर्निंग पाते हो, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस टू। ये हमें बहुत बड़ा बस लगता है, ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। नो, दीज आर सम स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुए हैं, पिछले 10 सालों में शुरू हुए हैं, और आज वो मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू में पहुंच चुके हैं। जैसे एब्सोल्यूट है, जिसके फाउंडर हैं आगम खरे और प्रतीक रावत साहब। ये 2015 में शुरू हुआ, लोकेशन जो दिल्ली बेस्ड है, और आज इनका नेट वर्थ जो चल रहा है 43 मिलियन डॉलर से ऊपर चल रहा है। नौ अपना गोदाम, इससे तो आप सभी परिचित हैं। ये इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2016 है, लेकिन ये रेवेन्यू आज 3 मिलियन डॉलर प्लस है इनका। और ये स्पेशलिटी हासिल की हुई है वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, ई एंड फैसिलिटीज में, संजय अग्रवाल जी। आफ्टर दैट एआई मोनो है, ये फाउंडर इसके हैं विवेक राजकुमार जी। इनका रेवेन्यू 1 मिलियन डॉलर प्लस चल रहा है। इनका सीड टू प्लेट वैल्यू चेन, जो आपको अपनी बोला अभी मैंने, टेक में एआई एंड डेटा साइंस, रियल टाइम सप्लाई चेन। तो ऐसा नहीं है कि ये यूथ सोचें कि बहुत बड़े लेवल का ही इनकम हो या टीम हो तभी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी न कभी इन्होंने भी छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। और हम और आप एक लोकल लेवल का लिंकेज, लोकल लेवल का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको एक अगर कलेक्शन करके भी सप्लाई चेन मेंटेन कर पाए, तो हमारे लिए एक बेहतर इकोनॉमी का साधन बन पाएगा। और हम एक नहीं ये कह सकते हैं कि 10 से 12 युवाओं को आप अपने गांव स्तर पे ही जॉब दे सकते हो, सेटिस्फैक्ट्री अपने गांव में रह के चीजों को कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी अनु मीना जी हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण महिला का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने 2017 में अपना एक स्टार्टअप एग्रोवेब करके खोला, और आज वो 5 मिलियन डॉलर प्लस का रेवेन्यू है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड स्टोरेज का वर्क करता है। तो आज हमारी जो पेरिशेबल जो भी कम्युनिटीज है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हैं जो कि काफी टाइम तक नहीं रखी जा सकती ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो इसका स्टोरेज का एक
वेयर हाउस का, स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का, इसका काफी बड़ा डिमांड, और इसका कोल्ड स्टोरेज वैन्स का काफी डिमांड है। इनका लोकल मार्केट तक अगर आप लिंकेज करा पाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के मार्केट तक को, सारे फ्रूट्स को और अपने मिल्क को, सारी चीजों को, प्रोड्यूस को कलेक्ट करके वहां तक ले जा पाओ आप चीजों को, और अपने प्राइस पॉलिसीज को डिटरमाइन खुद कर पाओ और वहां पे सेल कर पाओ, तो आप खुद भी इंगेज होकर अपने लोकल कम्युनिटी बेस्ड उस पे अच्छा खासा आप लीडरशिप का वो भी कर सकते हैं, और इनकम सबकी बढ़ा करने के साथ अपनी भी इनकम आप अपलिफ्ट कर सकते हैं एक अच्छे खासे बिजनेस को अडॉप्ट करते हुए। साथ ही साथ बेंगलोर कर्नाटका की ई कॉमर्स कंपनी है ये बिग हार्ट, ये आप तो काफी परिचित हैं इससे। आप कहीं भी आप स्मार्ट बाजार में भी जाएं, कहीं भी जाएं, इनका हर किसी से टाई अप है आज, और ये $14.77 बिलियन से ऊपर का रेवेन्यू कर रहे हैं। ई कॉमर्स, ई रिटेल, एडवाइजरी, डायरेक्ट टू फार्मर्स एंड सप्लाई चेन इनका है, और इवन इनका एप्लीकेशन भी जो कि डायरेक्ट आपके होम टू डोर टू होम डिलीवरी है इनकी। इसके बाद बीजक, जो कि काफी नामी कंपनी हो चुकी है आज बीजक, और उसके बाद आता है भारत एग्री, जो कि 2017 में फाउंडेड हुई है और 10.9 मिलियन का आज ये कर रहे हैं। और इनका बेसिकली जो वर्क है एडवाइजरी का है, जैसा आप एग्रीकल्चर एडवाइजर बन सकते हैं, आप अपने एक्सपर्टीज को फार्मर्स के बीच में रख सकते हैं, उनकी जो गैप हो रहा है, नॉलेज का गैप हो रहा है, उसको आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि हर एक फील्ड में एडवाइजर होता है, ऐसे एग्रीकल्चर एडवाइजर आप बन सकते हैं, क्योंकि हम इसको एज अ प्रोफेशन अभी नहीं देख पाते हैं, सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म से ही बैठ के एडवाइजर चीजों को बताते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट लिंकअप कर सकते हैं फार्मर्स से, उनको उन चीजों से जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनके लिंकेज को दे सकते हैं, और उनको और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये अभी कल की पिक्चर है, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे मोस्ट, क्योंकि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का नॉमिनेशन था, जिसमें मैंने भी नॉमिनेट किया था, बट बिकॉज ऑफ सम एंगेजमेंट मैं ध्यान नहीं दे पाया जीमेल पे अपने, और वोटिंग करवानी थी, करवा नहीं पाए। और नहीं तो यहाँ पे हम भी पहुंच सकते थे। आप कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो क्रिएटर्स हैं, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्रीकल्चर क्रिएटर्स या वर्ल्ड वाइड क्रिएटर्स जो हैं, अलग अलग हर एक कैटेगरी में उन्होंने नॉमिनेट किया। उसमें जो मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर हुई है, उसमें बहुत अच्छे जान पहचान हमारी लक्ष्य डाबरी सर हैं, जो कि दिल्ली के ऑर्गेनिक एकर फार्म है इनका, उसके मालिक हैं। तो उन्होंने अब तक 30,000 से ज्यादा किसानों को एग्री टूरिज्म के तहत, वहां आप रहते हैं, खाते हैं और घूमते हैं, उसके साथ फार्मिंग को सीखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सीखते हैं। वो इस तरह का मॉडल चला रहे हैं। आज एक युवा है, मैंने इसलिए लगाया कि आप देख सकते हो कि एग्री टूरिज्म का कितना अच्छा उन्होंने इस्तेमाल करते हुए आज मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर का अवार्ड कल इनको प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिला। तो इस तरह से युवा नाम भी कमा सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं फील्ड में। जैसे आज इसी पैशन को फॉलो करते हुए हम लोग भी आगे ही बढ़ ही रहे हैं। हर युवा के पास एक दबाव होता है समाज का, घर का, कि आप गवर्नमेंट जॉब जाओ, बड़ी व्हाइट कलर जॉब्स के लिए आप कॉर्पोरेट्स में जाओ, लेकिन ऐसा नहीं। आप सोशल सेक्टर्स को भी पकड़ सकते हो, आप अपना खुद का बना सकते हो, स्टार्टअप भी पकड़ सकते हो, सप्लाई चेन में कर सकते हो, अपने गांव की लोकल इकोनॉमी के एक पार्ट बन के आप उसे ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इकोलॉजिकल बैलेंस पे आपका ध्यान, चूंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हो, सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल गैप को आप दूर कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देख ही रहे हैं लक्ष्य को अभी सामने। आप इस तरह से आप अपना नेम एम पेन यहाँ तक भी पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं जॉब्स में पाएंगे, यहाँ आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाते हैं और आप मेंटली पीस भी रहते हैं इन चीजों को लेकर। और कंक्लूजन पे मैं अब आना चाहूंगा कि हमारे यूथ को अगर हम लेना चाहते हैं, तो मोटिवेट द यूथ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मेकिंग देम एज अ पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड इकोलॉजी टू बैलेंस दीज टू फैक्टर्स फेयरली। बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ इनको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाना, हमें उनको बनाना है एग्रीप्रेन्योर। उन्हें हमें इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल दोनों बैलेंस के साथ बनाना है। ऐसा ध्यान में रखना है हमें, हर यूथ को इस तरह से बनना है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है सस्टेनेबल ग्रोथ। साथ ही इम्प्लीमेंटिंग द 7 strategies mentioned above, education technologies, entrepreneurship, experimental learning, advanced agricultural implementation, financial support and collaboration, we can inspire and engage the younger generation in rural agriculture, and also empower them to contribute the growth, innovation and prosperity of the Indian agriculture. Together, let us create an environment that encourages the youth to embrace agriculture as a fulfilling and rewarding profession, ensuring a prosperous future for the sector and nations as a whole.
तो ये नीड ऑफ द आवर थी जिसको हमने बताया, और अभी समय थोड़ा कम था और हमें थोड़ा देर से ये चीजें पता भी चली थी। तो अगली बार अगर जब आपसे मिलेंगे तो हम एक लोकल स्टडीज के साथ मिलेंगे, यहाँ पे झारखंड की लोकल स्टडीज या कंट्री के किसी भी एक पार्ट का लोकल स्टडीज के साथ मिलेंगे, जिसमें हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे चीजें हो रही हैं, यूथ्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज तो कर ही रहे हैं, अपनी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तो कर ही रहे हैं, डाइट डाइवर्सिटी भी कर रहे हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं और अपनी इकोलॉजी को भी स्वस्थ बना रहे हैं, इकोनॉमी को भी स्वस्थ बना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच to Aftar Society for giving me this opportunity to represent the youths in agriculture and this important topic with all your participants. Thank you, sir, for this very informative session. All the participants are requesting your presentation, your PPT. So if you could share it in the group or to the organizers, that would really be great. The participants have gained a lot of knowledge, especially in respect to skill development and agripreneurship to youth in agriculture. So, and we really value your sharing with us your knowledge and concern on encouraging the farmers and researchers towards skill development and entrepreneurship. We do send you our best wishes, sir, and more success in your path. Thank you so much. Thank you so much. I would like to say one thing. Those who are interested in all these things and want to get skilled, so I don't have that much time to communicate with them. So I will share my contact details there for further details and practical knowledge basis suggestions. They can contact me over there, and I will definitely share my PPT with them. So I'm writing my contact number. You can WhatsApp me there with your details and all, so we can connect. And I will very happy if you a single person from this training program will be skilled and come on a grassroots level to change the farmers' economy and ecology. Thank you so much for your dedication, sir. It will be really helpful for the participants. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I'm So writing now my moving number there. forward, our next guest speaker is Ms. B. Pragati Reddy. Ms. Pragati Reddy is a passionate advocate for sustainable agriculture and rural development. She holds a postgraduate degree in agriculture with a specialization in genetics and plant breeding. Her journey in serving farmers began during her undergraduate years when she actively engaged with a non-governmental organization to support farming communities. In 2020, driven by a desire to expand their impact and enhance service to farmers, Pragati co-founded Farmers Park Right Mart. As the co-founder of Farmers Park, she leads initiatives aimed at empowering farmers through awareness and training programs conducted at the grassroots level. These programs focus on soil health, organic farming practices, and natural farming techniques, aiming to enhance agricultural productivity while promoting environmental sustainability. One of Pragati's key contributions through Farmers Park is the provision of free soil tests for farmers by analyzing soil samples and providing personalized recommendations based on the results. Farmer Park assists farmers in implementing best practices tailored to their specific needs. Pragati and her team further supports farmers by offering comprehensive standard operating procedures to optimize agricultural processes and maximize their yields. Driven by a deep commitment to rural development and agricultural sustainability, Pragati Reddy continues to make significant strides in empowering farmers and fostering positive change in rural communities through her work with Farmers Park. Madam, your dedication to farmers and achievements is really admirable, and we can't wait to listen to you. I wholeheartedly welcome you and would like to hand over this virtual stage to you. Over to you, ma'am. Thank you, thank you. And first of all, I thank everyone for here to be a very patient, and thank you, Dr. Jitendra Mehta, for giving this opportunity. And namaste to everyone and good evening. I'll share my screen before presentation. Is my screen is visible? Yes, ma'am. Okay.
Myself, Pragati Reddy, founder and CEO of the Farmers Park. Today, I am going to deliver you a presentation on a topic importance of soil health as in quest of the future agriculture. I have changed the slide. It is visible. Not yet, ma'am. Ma'am, you've changed to slideshow mode? Yes. Oh, it is not yet shown here. Only the minimized view is still there, ma'am. Okay. I think there is a problem. Let it be. Is it okay? Oh, ma'am, can you click on that slideshow button once again? It might Yeah. come now. Okay. Now? No, not yet. Okay. If it is like that, let it be because we are wasting time. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, continue, please. Okay. Importance of the soil. Before describing the importance of the soil, what is a soil? Soil are not just a dirt. They are a vibrant ecosystem teeming with the life. Soils are the living systems. As the living system, they change, they adopt and evolve to the different conditions that the climate and that human beings might be giving to them. Since industrial revolution, we have started to use the land according to our needs and what we need it for. For agriculture system, it is very important. If we are misusing or excessively using chemicals to our crops, we are creating a dependence to these crops, to the nutrients. But at the same time, we have also altering the natural ecosystem that the soil has. Do we know what the effects will be in the next few years? Not very sure. But we know that soil fertility is declining at outstanding rates each other. So, soil health is a state of a soil being in sound physical, chemical, and biological conditions. If you see this slide, it is an interdependent that the soil health is depending upon the chemistry, biology, and mineralogy, everything, each and every aspect. So, it is the condition which having the capability to sustain the growth and development of the land plants. Soil health is connected to sustainable soil productivity through the balanced physical, chemical, and biological properties. If all these properties present in the soil in the balanced proportionate only, then only it leads to the healthy soil. Okay, what makes a healthy and fertile soil? Obviously, the soil properties. Coming to the soil properties, these are differentiated into physical, chemical, and biological properties. As I have mentioned previously, that altogether, if they have a balanced proportionate only, then only the soil will be healthy. So, coming to the soil physical properties, these are mainly controlled by the soil matrix. One of the most important soil property is the soil texture. Not all crops are created equally, as we all know that. A variety of soil textures can be found in agriculture lands depending on the relative composition of different soil particles like sandy soil, clay soil, silt soil, like this. So, the texture, what is the soil texture? The texture influences many soil functions that we may raise such questions like how fast the water will flow within the soil, how much water the soil can hold. This is also a big question, and how fertile the soil will be. All this we come to know when we know the soil, what is the soil and what is the health of the soil. For example, soil with high percentage of clay will drain water slowly compared to the soils with a high sand percentage. Why? Because the clay soils generally hold water tightly because the pores of the clay soils are smaller, while the sandy soils will retain little water due to the large pore size. Coming to the bulk density, another physical property which is very important one is the bulk density, which can measure the how closely the soil particles are together.
If the soil particles are too close, then we can define such a soil as a composite soil. So what is composite soil? How we can define it? It is nothing but if the soil is composite, it inhibits plant rooting and water movement in the soil. And another one is the soil structure. Soil structure is also important physical property. It will affect the water movement and also the resistance to erosions and nutrient cyclings too. Okay. Coming to the soil chemical properties, these are related to the properties that directly affects the plant nutrients. If you see in the picture, the plant need adequate supply of nutrients to grow, to complete its reproductive phases. If any of these nutrients available in the plants, if it is not available in the plants, then the plant may not grow properly. On the other hand, if these nutrients become excess in the plant under the soil, then also the growth is impacting on this. So there are 17 nutrient elements that most plants need for the productive growth and development. Like we differentiated it into micro elements, macro elements. That the macro elements, which nothing but NPK, these elements needed to the soil and to the plants in larger concentration comparing to the micro and the secondary nutrients. And the other chemical conditions that affects the crop, which includes the soil pH. Soil pH also plays a crucial role. Like if the soil pH is less than 7, 6.5, then the soils are considered as the acidic soils. And if the soil concentration is greater than 7, pH is greater than 7, then the soil is considered as the basic or alkaline in nature. So if the pH is neutral, then only the nutrients, most of the soil nutrients elements will be available for the crop to uptake easily. And other elements, chemical elements impacted is the salinity, which is nothing but the excess salts, and the sodium levels. If the salinity and sodium levels are also not in a proper ratio, that excess salts or low salts, these also created a problem that losing in the soil structure and the stability. Coming to the soil biological properties, the biological properties of a soil, which refers to the living organisms inhabit it, which includes, as in the picture I have mentioned, that the bacteria, protozoa, nematodes, earthworms, and other microorganisms also. These all organisms play a crucial role and that they can break the organic matter in the soil and convert it into a good organic matter, like altogether make a food web. So what is a food web? The process in soil that which has been done by the microorganisms is called as a food web. If you see in the picture, it is really a flow of a carbon through a food web. You can also think of it as the movement of energy from sunlight through the system or any other nutrient also. Generally, the soil food web is nothing but the soil biome, just like a human biome. Human gut biome, which is responsible for the digesting our food. So too the soils has the same biome, which breaks down, then drain the organic matter and releases the nutrients into the plant in available format. So this is how the nature has been feeding plants from billions of years. The major group that make up the soil food web are like here, which includes in the picture like the bacteria, fungi, protozoa, and nematodes. When these are all in the balance, these different groups interact with each other and also with the plants to create an abundant ecosystem, such as the great forest in the world. Have you ever wondered that the forest are the most productive ecosystems in the world? Without any need of the fertilizers, pesticides, have you ever wondered that how they are very good ecosystems? The answer lies itself in the soil biology. With a healthy biome, the soil can provide the plants with all the nutrients they need. And with the
a number of other benefits also, like it will provide the resistance to diseases, pests, flooding, droughts, and so many benefits. So we can say that the soil food web is nature's operating system, that we are not operating it, nature itself operating it. But unfortunately, we humans have disturbed the soil food web in almost all the soils that we manage, and causing it to become the unbalanced. Now the crops are in the struggle. So, threats to the soil health. Humanity, as usual, humanity is facing a number of essential threats. Let's take a look at some of these related to the soil, like nutrient depletion, topsoil erosion, soil composition, and desertification, like this. And the most obvious one is the soil erosion. Okay. United Nations of a Food and Agriculture Organization has estimated that we only have around 60 years left before all the world topsoil is depleted. The soil biome means for these, if the soil get depleted, then what is the solution? As I mentioned previously, the soil biome only. The soil biome prevents the soil erosion by both wind and water by building its structure. And the another threat we are facing is the ecosystem collapse. The United Nations have recently stated that the insect plant has been disseminated by over 25 to 30% each decade when comparing to the last 30 years. Which means that there are 57% to 60% less insects comparing to the last 30 decades today. And the bird populations also same, that they also declined by the one third in the last 15 years. So we have to get a question that how does this soil food web help well? Then the United Nations have identified the use of the pesticides are the major cause to decline these insects and pesticides. Another threat to the life on the earth is the climate change. Fortunately, the soil is capable of holding tremendous amount of the carbon in the bodies of microorganisms and macroorganisms, megaorganisms too. So how these soil carbon will help, and also soil food web could put the stop to the climate change through the soil carbon sequestration. So what is this soil carbon sequestration? It is that the atmospheric carbon is absorbed by the plants and pumped into the soil. After pumping it into the soil, it will store for the hundreds of years with the help of the fungal hyphae. So, how do we manage the soil health? Understanding and managing soil biology is very essential for sustainable agriculture, ecosystem restoration, and environment conservation. Like by reducing the soil disturbances and practicing the crop rotation practices, we have to know which crop is suitable, and we have to know what about the trap crops, what are the covering crops, and we have to go for the mulching practices. And we have to use several organic matter enhancement practices. We have to develop the organic matter inside the soil with the organic and natural way only, like giving Jivamrutam, Panchagavya, and several other Kashayalu, Vavilaku Kashayam, and giving Neemastra, Brahmastra, like this. And also, we have to promote the diverse plant specifications too. And beyond all this, we have to need a patience, because that converting the soil health is not an overnight issue. So before going to this conversion, we have to be get the patience. If not, our situations will be like the Sri Lanka situation. So how do we manage? By the conservation tillages, cover crops, as I said before, by the compost, vermicompost, and this is the picture that we creating awareness on Jivamrutam programs. So conservation tillage means it is like a ploughing. Ploughing is a major cause of the
major problem, as it destroys the larger microorganisms such as the fungi, protozoa, which are living inside the soil. So it will disturb the soil food web balance. These results in a system breakdown. Because of this, the nutrients are no longer made available to the plants, and the protection from the diseases also get some compromised. So before the industrial revolutions, the humans would plow using that oxes, bulls, which provide only the 3 to 4 HP horsepower. But now, with the help of the modern tractors, they yield up to 400 and more than 400 horsepower. So far, more damage is done to the soil by the modern equipment. And the another problem is also but the use of fertilizers, which leads to the decreasing in the soil fertility. But the good news is that we can restore the soil biome within a short span, which is results in a lot of benefits for the both the farmers and also for the environment too. And because of this soil food web, we provides and access because the soil food web itself provide the access for the several nutrients, the constant flow of the nutrients from the soil organisms and freeing the soil particles themselves. So future farming, by improving the soil health with all the above mentioned measures, we can ensure a sustainable agriculture farming for sustainable future and environmental sustainability. And it is our responsibility to protect and nurture the soils by practicing the sustainable agriculture and by reducing chemical inputs and also promoting the soil conservation techniques. So let's recognize the importance of the soils and living systems and work together for the safeguard there and health and resilience for the well-being of our planet and also for each and everyone. So this is about the Farmers Park, which we established from 2017, working from 2017. Farmers coming to the Farmers Park, this is the pioneering integrated farming solutions provider, which is dedicated in promoting the sustainable agriculture practices, which was established in 2017 under the umbrella of Navnirman Foundation Charitable Trust and NGO in Vishakhapatnam. And we have expanded our reach to serve farmers across Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and also some parts of Tamil Nadu too. At Farmers Park, we prioritize soil health and integrated pest management practices, offering farmers that free soil test because with the soil test only we can know that the what is the nutrients available, deficiency of nutrients or efficiency of the nutrients. So with the help of the soil test, we can balance the nutrients and also we can prevent the pest managements and diseases attacked which is going to be attacked in the future. So integrated farming, and we offering the free soil testing advisory services to the farmers. And our commitment to the organic and natural farming methods is reflected our comprehensive training and awareness programs, which are aimed at enhancing the agriculture productivity while preserving the environment. Through our Farmers Park app, we are facilitating the access of the farm inputs and natural food products also, and empowering the farmers to optimize their operations. And additionally, we are extended our services by collaborating with the organic stores, which ensure that the farmers that their products can be purchased easily. To date, we have positively impacted over 5,000 farmers, and our vision is to extend beyond our scaling that our services throughout the nationwide with the goal of revolutionizing the farming practices across the India. In our endeavor to cultivate a deeper understanding of the agriculture, we engaged with them from schools and some agriculture colleges also in Andhra Pradesh and Telangana.
through a name called as Explore Agrotourism, and we initiated it by fostering the awareness from the early age to the students, and we aim to instill a sense of appreciation for the vital role agriculture plays in the sustaining of our communities and to our planet too. So finally, at Farmers Park, we are dedicated to driving positive change in the agriculture sector, one farm at a time. So join us in our mission to cultivate a sustainable future for the future generations. Thank you, and do subscribe for our YouTube channel, which we are giving free advisory supports for the farming also. Thank you so much, ma'am, for such an informative and Thank you. amazing session that you just had. Your works are amazing. I believe the participants will gain a lot of knowledge, especially in respect to the importance of soil health, where all nutrients of our health and nutrition stems from, and how it is crucial to conserve it. Thank you so much, ma'am. We do send you our best wishes and success, more and more success in your path. Thank you so much, ma'am. So on behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, College of Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to all the speakers and participants for joining this international training cum workshop program and for being so patient and attentive throughout. And I would like to inform all the participants that there will be no program for tomorrow as it is Sunday. Take rest, enjoy, and refresh yourself, and we will resume on Monday at the same time. Thank you all. Have a wonderful evening, and see you all on Monday.